Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. Thank you very much for joining in. Um, आज का बहुत special session है post budget commentary hosted by your very own taxation subcommittee of ACCA Pakistan. You can see all the bright faces, all geared up, all set to run this session purely for the ACCA fraternity. So this is an in-house session. So it has to be very, very interactive, very conversive, and very sort of knowledge sharing session. So आप लोगों के सवालात, आप लोगों की participation जो है वो बहुत important है. और just because इस session का purely the objective of the session is that we need to keep our members and our future members informed about the changes happening in Pakistan with respect to the taxation and laws. So a very warm welcome to all of you. I'll just do some housekeeping. I'll just open the floor and then we'll go on and uh, talk to the panel. Uh, what I want to say this time is that ACCA has done some exemplary work, and Alhamdulillah, for the past few years, the taxation subcommittee of ACCA and the work it has produced has been phenomenal. So this time around as well, we had a budget proposal in place, which was widely shared with all the ACCA stakeholders. So with all the members, with all the students, affiliates, learning providers, universities, employers, our partners. Then it was shared with the media. We got exceptionally good media coverage, and then it was also shared with the Ministry of Finance and the relevant authorities. So excellent feedback, excellent activity. I think fruitful one. Then we went on to do our pre-budget event, and I can tell you that pre-budget event. Um, which was hosted on the 9th of June, which was about 3 days before the event, was solely organized by all these faces that you see on the screen. So I think it's सिर्फ Ali missing है, Ali Mazahir but बाकी तमाम लोग, particularly Umar, Atif, Qasim, Shehzad, and Mudassar, all of them, they were a part of our preparation for the pre-budget. Excellent event, I must say. Excellent participation. ICMAP के साथ हमारा बहुत close collaboration चल रही है in events के लिए, and therefore we have been able to make a mark when it comes to the pre-budget sessions also. Today आप अली is our जहीर को मैसेज किए post-budget आपके फेवरेट विद लाहौर टैक्स बार Lahore Tax Bar Association के लिए. So now with the post-budget event today is our internal session. So it's a commentary on the changes being proposed to the Finance Act. Um, and then the most important conference that we have now hosted, I'm going to share the date with you. It's on the 22nd and 23rd of this month. So very soon you will be hearing from us about the launch of this event. 22nd, 5 to 7, and 23rd, 5 to 7. On both these days, we have invited all public figures to come in, talk about budget recommendations. हमने एक बहुत methodical approach use की है, unlike all other post-budget events taking place. The brainchild of, once again, the taxation subcommittee. What we are doing is कि हम specific जो 8 growth sectors हैं पाकिस्तान के, जो growing sectors हैं, जो कि backbone है पाकिस्तान की economy की, हम हर sector के ऊपर exclusive focused 15 to 20 minutes की conversation करेंगे with a very senior resource from that domain sitting on the other side. So that is what the plan is. I'm sure it will be very, very fruitful, very interesting conversation. I will encourage all of you to participate there as well. And to top it all, it's not going to end here. So it's a complete plan that the subcommittee has prepared. इसके बाद चूंकि हमने अपने budget proposals में provincial level की interventions भी recommend की हुई थी और provincial budgets भी आ चुके हैं, so हम इसके बाद अगर उनकी enactment हो गई होती है तो हम provincial taxation के ऊपर या sales tax के ऊपर भी हम लोग कुछ sessions run कर रहे होंगे. So suffice it to say that we will be very, very comprehensive, very detailed, starting from, the pre-budget, going on to the Finance Act, and later on the implementation.
और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हम हर चीज को टच अपॉन कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो मेनली प्रोसीजरल है। आज हम ज्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम डेफिनेटली जो प्रोसीजरल चेंजेस आई हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अकाउंटेंट्स टू अंडरस्टैंड, हम उनके ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन भी कर रहे होंगे, और उमर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। So, before going any further, I just wanted to make a couple more announcements. And the first announcement is that after completing or attending this session, you will automatically receive a certificate of participation through email. So that will come to you. And number two, this session is being recorded, and therefore you will be able to hear this conversation as many times as you feel like, after the session also. आपको जो इसका रिकॉर्डिंग लिंक है वो या तो आज जो जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया है उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर दीजिएगा तो रिकॉर्डिंग रन प्ले हो जाएगी, वगरना आपको थ्रू ईमेल भी इसका रिकॉर्डिंग लिंक सर्टिफिकेट वाली ईमेल के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। जो प्रोग्राम है आज का वो इस तरह है कि राइट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन आई विल हैंड ओवर टू द चेयर ऑफ आवर मेंबर्स नेटवर्क पैनल and the head of ACC Pakistan's taxation subcommittee, Umar Zahir. I will hand over to him. He will run a small presentation where he'll talk about what recommendations had ACCA made to the federal and provincial budgets, what changes have been accepted, and then go in detail with the full panel. We'll be doing conversation around what changes have been put in place and what impact will they generate. Iske baad, a full 1 hour has been set aside for your questions. So like I said, it's going to be a very, very interactive session. We want to hear a lot of questions from you, and full 1 hour has been set aside for specific questions. Please try to keep those questions not specific to yourself or not specific to your organization. हम किसी एक organization के perspective से बात नहीं करेंगे, किसी एक individual के perspective से बात नहीं करेंगे. Keep your questions in a way that they benefit the entire audience. ठीक है, और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी पैनलिस्ट से भी कि हम कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कमेंट्स जो हैं उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे होंगे. सो with that, I would like to hand over to Umar Zahir Mir, who is going to take us through a presentation. He also has a very important announcement to share with you. So, Umar, over to you, and let's see what you have to say. Thank you very much. Thank you, Harun, for that wonderful opening and for the kind compliments. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh Allah, open my heart and ease my task for me, and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. सबसे पहले तो जी तमाम मेंबर्स और फ्यूचर मेंबर्स को जो आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ से पूरी टैक्सेशन सब कमेटी और तमाम MNP एज वेल एज ACC ऑफिशियल्स की तरफ से अ वेरी वार्म वेलकम. सैटरडे को आपने टाइम निकाला है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं. हाउएवर, एज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट अप्रिशिएट कि ये हमारे प्रोफेशनल कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर है, जिसमें हमने प्री बजट किए, अब हम पोस्ट बजट कर रहे हैं, और इनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट के बाद हम फाइनेंस एक्ट के ऊपर भी इवेंट कर रहे होंगे, और इन बिटवीन नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारी नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है वो हारून साहब ने ऑलरेडी आपको अनाउंस कर दी है. थोड़ा सा मैं आपको MNP और टैक्सेशन सब कमेटी के वर्क के बारे में पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. For those of you who are not aware, MNP is the abbreviation of Members Network Panel. This is basically members representative body in Pakistan. So how ACCA structure work, and I believe that all of us should be aware of that. And all these details are available on ACCA's global as well as Pakistan websites. It's extremely simple. ACCA is member-driven organization. It's an association of members. So we have a global council, which is not supposed to be reflecting any particular country, although members are there from respective country and they make policies. Those policies are implemented by the ACCA officials, the employees, the teams that are working on ground. Now, every country has a member network panel, or sometimes they are referred to as MAC,
advisory committees, etc. These, in principle, are just advisory body. They take the feedbacks from members in the country, what concerns them, what are the key issues, what are the challenges, the possible solutions, how should we be forward looking and all, and communicate that through two tiers. Number one is the local ACCA office, the head of ACCA Pakistan. We are also lucky that we have the regional head of member affairs with us. So that's one particular way channel. The other is by way of international assembly and interaction to the council. So that is basically the role. But I'm very proud to share that MNP and all its subcommittees, especially the taxation subcommittee, has always gone beyond the call of duty and volunteered to even come into action by so that they can ensure the quality of the initiative by volunteering their time. And all these members are members like you who have their other day jobs or businesses and are, mashallah, at very senior positions, but are volunteering with this same that they all want to give back to the profession and the fraternity. So I would also like to extend my heartily felicitation on the successful creation of the budget proposal, the pre-budget, post-budget, and the future events we are holding to the entire subcommittee members as well as the MNP. And I'm also very proud of all my team members who have taken time out of their busy schedules. So that's that. Now moving on to the taxation proposals. Alhamdulillah, ACCA has always been groundbreaking and forward thinking in its approach. So ACCA was the first ever accounting body who started the trend of economic commentary. That normally the way budget proposals are made, we often laugh in our circles that they can be termed taxation proposals because the traditional approach is that they are very much just focused on, okay, these changes so it should be in income tax ordinance, this should be in the sales tax act or in the sales tax services act or in the custom and FED, etc., etc. So what we did was we said, hey, the ultimate aim of the budget is to ensure that there is positive result and outcomes in the economy. So there are some critical taxation proposals, but the way we make them is we link their impact on the economy with the discourse that we are presenting. Similarly, as a separate area, we highlight the key sectors in economy. So for example, there is agriculture, there is manufacturing, large scale, small scale, there is construction, there are export driven sectors, there is IT and upcoming technology, BPO, human resource, etc., etc. So this is something that has been very unique in Pakistan. But I'm glad that, as usual, other accounting bodies has started following ACCA's lead. This year, in addition to the general proposals on taxations, etc., obviously we continued with the trend by highlighting the developments in the various economic area that we should be focusing on. So what we did was we started with the ACCA's 12 global tenets of taxation, sharing how they are relevant to Pakistan, highlighting how we can adopt them, bring betterment in our taxation regime to ensure that the fundamental issue of trust, public trust, that has been a major challenge in Pakistan can be addressed, and it can be addressed if those proposals are entirely in their entirety implemented. We then moved on to key areas within the taxation regime. For example, several proposals on broadening of tax bases. I'm glad that some of our proposals are entirely and some have been partially accepted. For example, we have been advocating for serious reduction in the tax rate and ultimately bringing them down to the single digit, arguing that not only the volume, the number of taxes in Pakistan is one of the highest in the region, the complexity, unfortunately, has been at a level where you can put it as one of the most complex system in the region, but the tax rates themselves have been one of the most high in the region too. So just to give you a perspective, I know there is a constraint in terms of time, so I'll try to keep it as summarized as possible. Let me just quickly give you an
idea by just touching the sales tax rate of various economies in the region. So in Pakistan, if we talk about sales tax, we know post 18 amendment, sales tax on services is a provincial domain. So let's keep things simpler and take sales tax on good, which is administered by FPR. The general average rate is 17%. Yes, there are few incentives and reduced rate for certain sectors, but that's the general rate. Now let's move to Malaysia and Indonesia, where the lowest tab for these are 6% and 10%. Bangladesh, after recent increases, has reached only 15%, but still have lower tiers for much more sectors than ours. In India, the lowest slab is just 5%. And I personally think that we should learn from there and be using the sales tax as a policy tool to promote economic sectors. So what India does is they want to promote local sector like agriculture, etc. And the rate would be extremely low, 5%. And they want to discourage certain spending habits. So for example, lavish non-essential goods being imported, and they'll increase that slab to 28%. Now, what would happen is that would seriously discourage that, which in turn all of you can understand will help in achieving a current account surplus, ensuring that the fiscal deficit can be kept in check by way of additional revenues, etc., etc. So we have highlighted these things, and I'm glad that the government has announced reduction in tax, several tax rates. We have also argued about increasing the tax net by deploying AI, data analytics, etc. And the finance minister has announced that they'll be using some of these technologies and going for this drive. So fingers crossed. Let's see, inshallah, this actually becoming a reality. We have also argued for increased impetus on direct taxation to achieve equity, certainty, and efficiency. While there have been some announcements in the budget towards this, but we believe there's still a lot to be achieved. In our discourse, ACC's discourse, where I've been honored to be representing ACC, when we have interacted with the ministers or government officials, their argument has always been two-pronged. Number one, Pakistan's economy is not documented. Number two, there is not this tax culture due to lack of trust and all those reasons. So if we suddenly go towards direct taxation, there would be a huge shortfall, and we are just not in a position to absolutely go towards that. What we proposed as a solution was that, okay, if you can't go straight away, why don't you do two things? Number one, go in a step-by-step approach. And secondly, take the project management rule. Take it as a project, the proposals that we have given you. Take one sector in any one city where you are getting the lowest revenue, so the impact is not material if it goes south, and implement them and study the result. If the results that we are claiming would be achieved as a professional body with a global backing and interaction and experience, then you would have the confidence to extend that. So we hope that this would also be done in the future. It's not been done right now. We have also proposed to make CNIC an NTN for all citizens, as has been constantly promised by the government too. We have also argued about rationalization, standardization, and automation of tax laws and administration to minimize the harassment, to do away with the subjective powers, especially audit powers of the FPR officials, bring in independent professionals. And you know, these proposals have been a lot in the discussion that they have been implemented by the government of Pakistan. And we believe if properly implemented, they will result in a positive result and public trust being achieved. However, remember, these measures will not work in isolation. So all these measures have to happen concurrently for that missing public trust to actually gain weight. Similarly, we have argued for the structural reforms, harmonization of federal and provincial taxation laws, and the government has announced that they have made serious inroads in this. However, because all the provincial taxation bodies are under the respective provincial governments post 18 amendment, but there is not much that the federal government can do in terms of stamping it authority. It's a continuous process, and ACC has been giving this proposal for last several years, and we are glad that actually work is now underway on these. But we surely hope that this would
speed up, because this is one of the major challenge for the business ecosystem in the country and hampering the economy as well. We have also argued for issuance of a single and simplified tax return, and the finance minister has announced that this has been worked upon and is in the final stages. An initial draft has been launched, which is not of a single sales income tax and sales tax return. So we believe that perhaps the work is not finalized, and it might not be this tax year that this tax return would be launched in. So this tax year will probably still be seeing the same old pattern. But the good thing is that the proposal has been accepted by the government and the work has started on it. We have also argued for introducing economic sectors and impact on economic sectors under jurisdiction in terms of GDP development, number of decisions rejected in the appellate tribunal as part of the performance evaluation criteria for all taxation officials instead of the sole revenue collection currently in force, because as professional we all know the impact that creates. Similarly, there have been so many other proposals that you can see. I'm sure you must have, at least most of you would have gone through our budget documents. We have also highlighted the government release stats on economic recovery and proposed spending priorities to catalyze growth. So, for example, while we have appreciated the current account deficit surplus, which has been achieved from a level of a severe deficit and was one of the major challenges for this economic team, we have proposed some measures to ensure that this trend will continue and not prove to be just a temporary measure. We have also argued for incentives for local industry and manufacturing, and additional duties and taxes on non-essential and luxury items, especially imported. Many of these have been achieved, but there was still room for more to be done. Russian digital had been appreciated by us, and we propose that it should continue to evolve with more products, and we are glad that the government has accepted this proposal. Russian car scheme has been launched, and a few other we have been informed in informal discourse that are in the pipeline. We have appreciated the growth in the agricultural sector of 2.77% as per the government. However, we believe that it has a potential to reach up to 55% of the GDP from the current level of just under 24%. But how can this be achieved? In our perspective, one of the practical steps to be taken in lieu of Pakistan's ground reality is that we can have minimal final taxes within single digit 5%, 7% on large agricultural landowners, and the revenue generated through these should be used to subsidize seeds, fertilizers, water, electricity, fuel, etc. for the small farmers. Similarly, we should promote the use of latest technology and access to cheap or ideally interest-free finances. The interest-free finance aspect has been accepted by the government. The technology thing is also being promised to be adopted and promoted, and we hope the other proposals will also be done. The challenge here is that post 18 amendment, this is essentially a provincial subject, but still, when the federal government take these steps, it kind of creates a benchmark and a political pressure on the provincial government to also replicate these steps. Similarly, we know that because of the NFC award, they are behind the scene collaborations and strings to be pulled, which can always be done by the federal government to encourage the provincial governments to also look, at least consider these proposals for the betterment of the ordinary person, the agricultural sector, and nation's economy. We also appreciated the recently announced 3.57% growth in the industrial sector, which was largely driven by manufacturing, 8.71%, and construction, 8.34%. However, we were concerned about the minus 6.49% in mining and quarrying and minus 22.96% in electricity generation. And actually, asked the government to give immediate attention to these areas. The solutions we proposed were ensuring proper legislation and rationalization to improve the situation for mining, which can help in attracting the FDI. The lack of proper rationalization and legislation is the biggest hindrance for FDI in this
key area. Similarly, working on the transmission line and energy mix and revising the existing costly energy agreement can seriously help reduce the negative trend for the electricity generation. And we are glad that our proposals have been accepted by the government, and hopefully we'll see these policies being implemented quite quickly. We have actually appreciated the government policies for the construction sector and argued that these steps should continue to ensure that the necessary momentum generated is not lost. And we are glad to share that again, the finance minister and his team has announced that the schemes for the construction sector and the rebates, etc., they plan to continue that beyond the June deadline that was previously announced. So this is again one of the key proposal of ACCA that has been accepted as well. Similarly, we have argued for human resource development that Pakistan is blessed to be a country with 220 million people, where as per various studies, 65 to 70% falls in the youth category. And this is our biggest resource. We have tens of millions of highly skilled English-speaking population, which is ideal for the BPO as well as upcoming technology. So not just IT, we have argued that artificial intelligence, blockchain, data analytics, all these upcoming technologies should be focused, as well as other professional areas. Freelancing should be encouraged, and government should help facilitate them. Also invest in the human resource, try to provide cheap finance, offer training programs which are very focused and centered not on the things of the past but forward looking. And we are glad to share that the government has accepted these and announced in the budget that they'll be giving interest free small loans in the cities as well. They have announced that there would be a blanket final tax of 1% with no harassment, no question asked for all the freelancers, not just IT based. And it has also extended the export rebate that was given to the IT sector. Furthermore, we argued that special technology zones should be created, and ideally, we should also have a discussion with our strategic partner China about creating special China-Pakistan technology zones on the line of the CPEC. The good step is that government has actually announced special technology zones with the budget proposal indicating that there would be a blanket tax exemption for 10 years, not just for the authority, but for all the businesses that come to operate there, so that the ecosystem for technology businesses can be promoted within the country. All these steps taken together, and if a proper push is given with regard to the interest-free financing, I believe that this has really the potential to push the country forward in economic terms. Because remember, all the developed economies are now moving towards knowledge economies. Yes, agriculture is very important. That is the backbone of our economy, and it will remain so because it offers us the food security, which is so essential in today's day and age. However, in order to go to the next level, to realize the potential that we have, we really need to shift on the knowledge economy as well. Similarly, we highlighted some areas of concerns like the unemployment rate, which although was generally at 5.8% as per the last available economic survey at the time of releasing our budget proposal of 2019 and 2020 economic survey, the highest unemployment, which was worrying at 11.56%, was prevalent among the age group bracket of 20 to 24. This was concerning as youth is essentially our core backbone of the human resource, and we believe it is a priority spending area. The government has announced that they'll be extending interest-free loans in this area as well, so that's good. Keeping in view of these various things we have discussed, we also highlighted the need that services sector, new industries, and agricultural as sectors should be promoted. Banking sector should be incentivized, and we should help promote a culture of entrepreneurship and take some measures to address the concerns of the banking sector as well. Some measures have been taken there. I'm realizing that we are probably reaching the end of the time I had to cover these areas, but it's really been exciting. There have been so many measures that ACCA proposed and have been adopted.
and we are really proud of the effort, the lobbying, the convincing that ACCA has done. However, there's always room for improvement. You can never say that this is the excellence, the epitome that we have achieved. Certainly, we always wish that we could do more. Just to sum up some important final things, let me share that with regard to promoting the culture of entrepreneurship as well as addressing the concerns of the banking sector, the government has withdrawn the tax on the cash withdrawals as well as the other banking instrument, and that was actually done in light of our proposal and also the feedback received from Governor State Bank, who shared that the impact of this measure has been that the cash in circulation to the bank deposit ratio actually went from 20% to 42%, which is worrisome. What this means is कि लोग actually बैंकों से पैसा निकाल के पर्ची के ऊपर alternate banking करना शुरू हो गए थे. तो जो मकसद था वो तो क्या हासिल होना था उस मैयर का, उसका नुकसान ज्यादा हो रहा था इकोनॉमी को, बिजनेस इकोसिस्टम को, डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव को, और मोर इम्पोर्टेंटली बैंकिंग लिक्विडिटी को. तो उसकी एक कॉस्ट बेनिफिट स्टडी करके ये स्टेप लिया गया. ACCA believes that this was a tough step, but hopefully there would be positive results, especially जो दूसरी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं फाइलर नॉन फाइलर्स के, उनको रिटेन करने और आगे बढ़ाने के नतीजे में, because ACCA has always advocated that the overall policy of differentiation in taxation treatment and incentives for filers as compared to non-filers should be continued to encourage people to come within the tax net. However, the most focus should be on using the various data that we have along with the latest technology. We have millions of people who are not within the tax net, but we have the data that they are owning property or luxurious vehicles or do air travel abroad, etc. Although the trend has reduced due to COVID that we are all aware of, but all this data can be used to capitalize on. For past outstanding refund, we also made proposals which the finance minister has announced that they have been accepted and they'll be issuing instruments which will be discounted and tradable by the bank to help resolve this issue for once and all. Similarly, there have been many other proposals, but it's now time to move towards the main segment where we'll be having a panel discussion and we'll be discussing more of these measures there. But before we move there, we have some very important announcement to make. One of the core proposals from that we receive from our members has been that in the field of local taxation and laws, there should be certification, there should be some kind of a program to bridge the knowledge gap or update them. Obviously, ACCA prepares you perfectly well for the challenges that are out there professionally. There's a reason that it's the global #1 body of accountants and has reached a level never been seen in the human history for any accounting body. However, once a person come to the field, they need to continuously update their knowledge. Secondly, we are also aware that many of the members, since this is an internal event, we can discuss openly. Many of the ACCA members, particularly based in Pakistan, do not adopt the ACCA's Pakistan tax variant that is available. So obviously it creates a challenge for them when later on they decide to stay within Pakistan. So this has been a thing that has been going to and fro several times. There's a very delicate mechanism around it. The MNP has been constantly proposing it, and the ACCA taxation subcommittee has been taking a charge on it. And the conversation from there developed onto that why don't we do this for all the 4 core areas that we have. So we have Pakistan taxation and laws, we have the public sector, we have the audit sector and the banking industry as well. So I'm extremely glad to share with you all now that ACCA MNP will be launching and taking lead in a members driven event for our members and hopefully future members as well, where comprehensive and unprecedented level of training will be delivered. Yes, there has been CPD programs before,
there has been a fantastic CPD program on the taxation arena, which I'm personally aware of, as I remember Harun Bhai and I personally built that with several of our not just evening, entire days and Ramzan spent during those programs. But the difference here would be that this will be a continuous and structured program. So, for example, first of the program that we believe and you can see on your screen would be Pakistan Tax and Laws Mastermind, where we'll be covering the federal and provincial tax laws of Pakistan, corporate laws in Pakistan, corporate governance, taxation audits. You have heard about the proposal, right? And the digital competency. So this will be the core area, and we will be releasing the detailed framework, the areas that we'll be covering, and announcement of the program in July, inshallah. And from there, we'll take this forward on a continuous basis. So all those who will be attending the program and will complete the program, which will be structured with a certain number of hours. I believe this is not the right time to disclose those kind of details. They will be announced later on in terms of the actual content, the hours, etc. But you should be aware that this program is being launched. You will get the details in by end of June or somewhere in July, inshallah, and the program will start. So we'll have one program that would be termed Pakistan Tax and Laws Mastermind, focused on the areas I've shared with you. Then we'll have a program for the public sector proficiency, which will be focusing on areas such as PEPRA rules, NAM, APPM, budgeting, SDG, ESG reporting, digital and data navigation. All our members who are working in the public sector are aware of the importance of these areas. Similarly, for our banking industry professionals, we'll have the area focused program on banking brains, where we'll be covering the core aspects of banking in Pakistan with the anti-money laundering requirements in the context of FATF, the compliance requirement, all that, forensic investigation and risk analysis in digital banking. Last but not the least, by any stretch of imagination, the fourth program that MNP will be launching and taking forward will be on audit adeptness. Here we'll be focusing on risk management, IFRS and IAS, audit reporting, audit and financial manual, SDG and ESG reporting, and basically audit in the future. Audit not just in future, but I believe it started happening now, audit in a digital world. So I believe that this is a historic moment. This initiative has been a long-standing demand of members and MNP, and really advocated for by all the subcommittees, taxation subcommittee, our corporate governance subcommittee, our banking industry, public sector subcommittee, etc. So seeing this culminating into action is really very close to my heart. And I believe just like the 6-digit program or the 7-digit program, which has reached a level where the participants are seeing that not just the certificate holds a value, but they are actually seeing the results on ground, will be seen here. Let me issue one clarification. It is not the launch of a new qualification. ACCA's qualification remains what they are. They are the existing qualifications. These are MNP driven, organized training CPD programs where the attendance certificates will also be issued, conceived and created by top professionals in the field, ACCA members who are serving at the senior most position to bring this into reality. So I hope you all will be feeling elevated. Please spread the news around so more and more members are aware. And do check out your email when you receive the email from Members Affairs somewhere in July. Don't forget to register. Take the first movers advantage and become the first one to actually join the free of cost program, the training program, CPT program being organized by members for members. With this, we come towards the end.
Thank you very much for listening so patiently. And I think it is now time to move on to the panel discussion. So over to you, Harun Sab, to introduce all the panelists. Thank you very much, Omar. Thank you for the initial opening remarks and details about the budget proposal that we had made. I think without any further ado, we should very quickly jump on to the panel discussion. See all our panelists eager to delve into conversations around the budget proposal and the budget discussion. So to begin with, Omar will be our moderator for today's session. Omar, as you know, is the managing partner MLCC, is the chairman of our members network panel, and also he heads the ACCA Pakistan Taxation Subcommittee. He also represents Pakistan on the Global Taxation Forum. Um, then, in no specific order, we have Atif Nawaz Tarar. He's a senior manager tax and legal at Yusuf Al Chartered Accountants, and he's also an executive member of the Karachi Tax Bar Association. Um, we also have with us Mr. Mudassar Khalid. He's a partner at UHY Hassan Naim and Company and is an ACCA member, part of our taxation subcommittee. Then we have with us Mr. Qasim Ali Shah. He's the unit head audit and regulatory compliance at Finca Microfinance Bank. And again, another member of the taxation subcommittee. And last but not least, we have Shehzad Shamsher, who's an audit officer at Federal Board of Revenue. He's with us as well. The smiling face that you see on the screen right now. So without any further ado, we have let's kick off the conversation. So Omar, back to you. By the Thank way, you, Harun. I think I can do the housekeeping also. So we'll take a namaz break at for Asr prayers. Do you think 6:30 will be a good time to do that? Yeah, sure. Yeah. Yeah. I hope that won't be too late. Yeah. Chaliye, over to you. Thank you. Thank you so much for the introductions, Harun sir. So let's quickly start. Initially, I will be asking all our panelists to briefly, within 2 to 3 minutes, give their quick overview on the budget and ACCA's budget proposal. Following that, we'll be asking specific questions. So Mudassir Saab, beginning with you, thank you for joining us today. What are your views on the overall impact of the budget on Pakistan's economy and ACCA's budget proposals? Ji, Assalamu alaikum, Umar. Thank you for having me on this discussion. It was really good to see the relevant proposals from the ACCA side, which were published in time and which were shared with the relevant authorities as well. Uh, the main thing which I think in the budget we should mention here before the other members is कि इनकम टैक्स की साइड के ऊपर कुछ चेंजेस जो सजेस्ट की गई हैं उनका बड़ा अच्छा ठीक ठाक इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री के ऊपर। नंबर वन, जो अमेंडमेंट इन असेसमेंट की बात की गई है 122 के अंदर चेंज की गई है, उसके अंदर शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिटेशन लगाई गई है। इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम फील किया जा रहा था कि टाइम लिमिटेशन नहीं होती है नोटिसेस की और दे कंटिन्यू टू हैव द इम्पैक्ट एंड हैरेसमेंट फॉर द टैक्स पेयर कि जब उसको क्लोज होने का कोई टाइम नहीं है। तो एक तो वो एक करेक्टिव मैयर आया है जो कि बड़ा अच्छा है। सेकेंडली जो देखने में आया है कि इनकम टैक्स की साइड पे जो कह लीजिए फिक्स टैक्स रिजीम दी गई है फॉर मैन्युफैक्चरर्स या स्पेशल टैक्स रिजीम कहना चाहिए, तो स्पेशल टैक्स रिजीम दी गई है फॉर एसएमई सेक्टर जो कि अच्छा होगा। बट मुझे सिर्फ इसमें कंसर्न ये रहता है कि पाकिस्तान में जितनी भी रिजीम्स आती हैं वो एक लंबे टाइम के लिए उनको नहीं रखा जाता, तो जब इंडस्ट्री के अंदर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है तो वो स्कीम वापस ले ली जाती है। तो आई होप सो कि इस दफ़ा अगर एफबीआर इसको फॉर द लॉन्गर रन 2-3 साल 4 साल उसको कम अज़ कम चलाए तो उसका नतीजा
हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस के साथ पॉलिसी में शिफ्ट लाते हैं और फिर बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट्स अभी स्टार्ट होने से पहले हम उसको पुल कर लेते हैं। अगेन you rightly mentioned on the banking side, ये जो चेंज सेक्टर ऑन द बैंकिंग, ये जो चेंज आई है जो प्रपोजल में भी थी कि जो रॉल्स के ऊपर टैक्स था, कलेक्शंस के ऊपर था, ये बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। सर्कुलेशन इन जो मनी इन सर्कुलेशन है उसको कम करके बैंकिंग चैनल के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होंगी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन अगेन बात वही है कि फॉर 6-7 years एक चीज इन प्लेस रही है, उसका इम्पैक्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। दोबारा से सर्कुलेशन मनी जो है वो बैंकिंग चैनल से आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसको वो टाइम देना चाहिए। अगर हम 3-4 माह में, 6 माह में या 8 माह में दोबारा से इसको फिर कहीं एंगेज कर दें तो फिर वो अच्छा चीज नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें जो जो विड्रॉल्स हुए एग्जामिशन के, उसके अंदर कुछ ऐसी विड्रॉल्स भी हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे यू वेरी वेल नो कि सैलरी सेक्टर के ऊपर, सैलरीड पर्सनस के ऊपर जो जो विड्रॉल्स ली गई हैं एग्जामिशन की, उनके मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड, उनके स्पेशल अलाउंसेस से रिलेटेड, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। सैलरीड पर्सन ऑलरेडी जो है वो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो टैक्सेशन की वजह से एक लिमिटेड होती है। ऊपर से परचेजिंग पावर ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर वो कम हुई है। और फिर हम अगर एग्जाम्पशंस भी विड्रॉ कर लेंगे तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरी साइड पे जो दो चीज़ें हैं जो हमें जो नज़र आती हैं इस बजट के अंदर, कि एक तो सेल्स टैक्स की साइड के ऊपर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थे उसको जो टैक्सेशन की साइड पे लाने की कोशिश की गई है, उसमें हमें बड़ी ठीक ठाक एनॉमली नज़र आ रही है। और ये नज़र आ रहा है कि ये डबल टैक्सेशन के मसाइल भी क्रिएट करेगा और ई कॉमर्स को डिस्करेज भी करेगा। सेकेंडली जो हमें नज़र आया है कि इस बजट के अंदर जो अप्रोच रखी गई, अगर मैं इकोनॉमिक साइड के ऊपर थोड़ा सा इसको टच करूं, कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है वो बनाया गया है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के अंदर जो मेजर चीज जिसको पिच कर रही है गवर्नमेंट या करती है, वो हमेशा से आपको पता है कि ग्रोथ लाने के लिए वो पीएसडीपी को पुश करती है और स्पेंडिंग्स को पुश करती है। और फिर उसको पूरा करने के लिए हम जाते हैं टैक्सेस की साइड पे। तो सम 2 years बैक जब 5500 बिलियन का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था इन शब्बर साहब टाइम, तो somebody asked me कि in July कि डू यू थिंक कि 5500 बिलियन इज अचीवेबल। तो आई टोल्ड हिम कि यार अगर 2-3 months के अंदर गवर्नमेंट ने स्क्रैम्बल किया, अगर एफपीआर ने स्क्रैम्बल किया, अगर लोगों की हमें हरकत नजर आई कि जो चीजें प्रपोज की गई उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम होता नजर आए, तो फिर 5500 बिलियन इज नॉट अ बिग टारगेट। बट प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीजें रेवेन्यू मेयर्स की सजेस्ट करते हैं और फिर हम वो स्ट्राइक्स की वजह से और दूसरे प्रेशर्स की वजह से और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके प्रेशर्स को सस्टेन ना करते हुए पॉलिटिकली हम उन डिसीजंस में वीक हो जाते हैं, तो हम 5500 बिलियन को फिर टच नहीं कर सके। तो इस साल 5800 बिलियन का टारगेट है विच इज ऑन द हायर साइड, आई थिंक सो। और अगर आप जो जीडीपी ये की हम ग्रोथ के हवाले स्पेसिफिकली से, अभी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहे ओके होंगे ओके कि इन टारगेट्स पे ओके ओके आपका क्या इम्पैक्ट है और वेरियस मेजर्स पे। ओके ओके अब आप जरा ओके ओके सम अप करें अगर इसके अलावा कोई चीज और जो आप समझते हैं क्रिटिकल है तवज्जो के लिए। नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने वो डिस्कस कर लिया। अब आप आगे अगर कोई चीज पूछते हैं तो। Fantastic input, Mudassir. Thanks for that. Now onward to Qasim. कासिम अगेन अगर आप 2-3 मिनट में अपना एक पर्सपेक्टिव दे सकें, बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी फील्ड है, आप उसके हवाले से भी फोकस कर सकते हैं और जनरली क्या आपका फीडबैक।
Over to you. जी थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट हुआ है। पहले आपने ब्रीफ किया, फिर मुदस्सिर साहब ने भी ओवरऑल एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया। तो आई थिंक आई विल we have a short of time, so I'll wrap up very shortly specifically to the banking sector। जैसे भी बात भी हुई कि कैश विड्रॉल्स के हवाले से कि जो उसके पर टैक्सेशन था, इसका एक इम्पैक्ट था, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आएगा भी, और मेजरली दैट वाज ड्यू टू मनी इन सर्कुलेशन का इशू था। तो इनिशियली वे बैक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू ब्रिंग द पीपल इन द टैक्स नेट। प्रीवियसली जब इसको लॉन्च किया गया था, फाइलर नॉन फाइलर के साथ किया गया था, और देन सब्सिक्वेंटली इसको एक एंड वेव कर दिया गया और सिर्फ ये नॉन फाइलर्स के लिए रह गया। लेकिन ऑन द अदर वे अराउंड मनी इन सर्कुलेशन इस खतरनाक हद तक उसकी रेशियो डिस्टर्ब हो रही थी, तो इट वाज द नीड ऑफ आवर कि उसको किया जाता। सेकेंडली ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी डिजिटाइजेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली आफ्टर द कोविड। मतलब दैट वाज एसेंशियल टू गो थ्रू दिस रिक्वायरमेंट। और अगर आप ये देखें, मैं तो इस बात को बिल्कुल मतलब खुशाइंद कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, जितनी हमारी टेलकोज हैं, इनको एक एम्बिट में लाना चाह रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, और दैट वुड बी दैट वुड बी ग्रेट एफर्ट एंड दैट would serve the purpose initially। हो सकता है इसमें आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं ऐसा क्यों है, और इसके ऊपर टैक्स रेट की बात की मुदस्सिर साहब ने कि इसके ऊपर टैक्स नेट्स और रेट्स वगैरह इस पर लगाए जाएंगे, तो शायद ई कॉमर्स इतनी ज़्यादा मोटिवेट ना हो या डिस्करेज हो। तो लेकिन एट द अदर वे अराउंड यू कैन सी दैट कि आप एक एरिया को स्पेसिफिक इंडस्ट्री का दर्जा देने की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज रियली गुड स्टेप। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू कासिम साहब। ऑनवर्ड टू आतिफ। आतिफ, आप अपना कैम अगर ऑन कर दें ताकि हमारे सारे मेंबर आपकी ज़ियारत भी कर सके। Great. See, when you have a smile like this, why do you hide yourself? अच्छा आतिफ, वेरी क्विकली अगर आप भी काइंडली अपना फीडबैक हमसे शेयर करें, आप क्या समझते हैं इस बजट और बजट प्रपोजल्स के हवाले से। डिटेल्ड फॉलो अप क्वेश्चन हो रहे होंगे, ये जस्ट आपका ब्रीफ ओवरव्यू है। ओवर टू यू। थैंक यू उमर साहब। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ओवरऑल बजट को कंसिडर करें तो इट्स अ गुड बजट, एंड यू कैन से इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन जरूर जाएगा। ऑल्दो शॉर्ट रन में आपको इम्पैक्ट उसके नजर ना आए, बट जरूर आएंगे। नंबर ऑफ द थिंग्स, नंबर ऑफ द मेजर्स आर टेकन बाय देम। ब्रॉडली हम उसको अगर कैटेगराइज करें तो वी कैन से प्रोसीजरल वन, द अदर वी कैन से it's a revenue generation. Third one, we can say economical impact and effect it could have. So ये मेजर्स थे, और मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम में जिस तरह से न्यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसको लेके आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया, ये बजट बहुत ही अच्छा था। और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना शॉर्ट रन के अंदर इतना अच्छा एक बजट आए। दूसरी एक अच्छी चीज थी कि बीइंग एन एसीसीए सब कमेटी, जो सब कमेटी जिस तरफ चाह रही थी कि कुछ मेजर्स के ऊपर वो फोकस करें, और जो प्रपोजल गए और जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सराहा और कंसिडर किया और कुछ को अंडर कंसिडरेशन रखा, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, और ये सब कमेटी मेंबर्स के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि उस चीज को कंसिडर किया जा रहा है, और हम ऑलरेडी जो बात कर रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शंस में कर रहे हैं। तो ऑल्दो आप अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर, जो विच इज एवर फेवरेट फॉर मी, सो उसके ऊपर रिफॉर्म्स होंगे, वक्त लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे जब सवाल उठाना शुरू कर दिए गए तो जरूर इसको कंसिडर किया जाएगा। उससे हटके हमारे पास टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही थी। टेक्नोलॉजी को दे आर कंसिडरिंग, आप देख रहे होंगे कि आईआरएस पोर्टल में भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सी और चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं। और इसकी जिस तरह एसीसी ने प्रपोज किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंसिडर करें, आप अपना नेट बेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप सपोर्ट वहां से ले सकते हैं, नादरा सिस्टम के साथ लिंकेज और नंबर ऑफ थिंग्स। ऑल्दो बहुत सी जगहों पे आपके सामने भी चीजें हैं कि बीआर एंड फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको कंसिडर कर रही है कि नादरा से किस तरह से किस हद तक वो सपोर्ट ले सकते हैं, और ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इंशाल्लाह सब बीइंग अ पार्ट ऑफ सब कमेटी आगे भी इसी तरह जो फर्दर गैप्स होंगे उसको जरूर हाईलाइट करेंगे
और अच्छी उम्मीद रखेंगे कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी अगर मैं ब्रॉडली थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दूं यहाँ पे जो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या एफईडी एंड कस्टम की बात करते हैं, दो कुछ जगहों पे गैप्स हैं, कुछ मेजर जो हैं वो अग्रेसिव थे, कुछ मेजर जो हैं वो हमारे लिए हम समझते होंगे कि वो ठीक नहीं है, बट मीन अगर आप तीन आपके नजदीक तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स हाईलाइट करें, इट डजंट मैटर आप उन्हें पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव, बट टॉप 3 कौन से हैं आपके नजदीक? अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव साइड से शुरू करूं तो जो टाइम्स ऑफ डिस्पोजल लेके आए, दैट्स एन ऑसम थिंग कि जहां टाइम लैगिंग होती थी, बड़ा लंबा टाइम खींचता था किसी प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज करने के लिए, एग्जामिशन सर्टिफिकेट को डिस्पोज करने के लिए, या और किसी जगह पे भी कोई ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए जो टाइम स्लॉट्स उन्होंने फिक्स किए और शॉर्टन किए हैं, दैट्स अ गुड थिंग फॉर टैक्स पेयर्स। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम टैक्स को रिड्यूस करने की जहां बात हुई है, secondly, that's a good thing कि 1.5% 1.25% लेके आ गए। और उसके अलावा अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करता हूं तो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में उस पैरामीटर्स को जो उन्होंने कंसिडर किया, 3 मिलियन से बढ़ा के 10 मिलियन के रेवेन्यू पे लेके चले गए, कि उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, तो एक जो कॉटेज इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा यहाँ से। और इसी तरह जो मिनिमम टैक्स की बात कर रहे थे 1.25%, और ऑब्वियसली वो उन्होंने भी वहां पे थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया कि बहुत बड़ी अमाउंट का, कि एओपी एंड इंडिविजुअल्स का अगर उस थ्रेशोल्ड से कम है टर्नओवर, तो वहां पे मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। दैट्स अ गुड थिंग। अगर थैंक हम यू आतिफ। टर्नओवर टैक्स के ऊपर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन Sure. फॉलो अप में पूछ रहे होंगे, तो थैंक्स फॉर गिविंग दैट क्विक ओवरव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय एनी मेजर, शहजाद साहब जी, कैसा है बजट और कैसे रहे एसीसीए के प्रपोजल्स? Assalamu alaikum everyone. Almost everything you very briefly, sir, defined everything. As far as the budget is concerned, sir, it's a kind of stabilization to growth after almost in a default situation we are. So it's an investment friendly and could be a turnaround year. So I'm very hopeful, inshallah. सर मेन जो हमारा जो जहाँ हम लैग करते हैं वो है हमारा तीन चीजें ऐसी हैं जो हम जो अब आपने डिफाइन किया सर। एक है जो करंटली हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसका जो एग्जिस्टिंग बेस है दैट इज ऑलमोस्ट 1.36% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो और डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो है भी काफी ज्यादा, तो वो जो टैक्स पेयर्स हैं उसके ऊपर एक किस्म से काफी बर्डन है। तो एक तो ये है सर कि रिडक्शन टैक्स का आपने कहा, दूसरा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स है, और एक है ट्रस्ट का सर। तो ब्रॉडनिंग ऑफ ट्रस्ट जो है ना सर वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जिस तरह आपने सर डिफाइन किया उसकी तरफ हमें जाना होगा सर। उसको ब्रॉडर करने के लिए ना सिर्फ हमें रिलायंस जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कम करना होगा, बिकॉज जब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सर इट्स दे लीड टू हायर इन्फ्लेशन, और इसके अलावा अनकम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो रिडक्शन करते हैं रियल जीडीपी की ग्रोथ में सर। ऑन द अदर हैंड सर डिमांड हमें क्रिएट करना होगा सर। डिमांड जो है ना वो क्रिएट होती है स्पेंडिंग कैपेसिटी से स्पेंडिंग कैपेसिटी सर वो आपकी जो है ना बढ़ती है आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए जो है ना सर हमारे पास देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर है सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन है सर, और ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर जिस तरह सर पता है कि 1% ऑफ जीडीपी है अराउंड, और जिसमें पोटेंशियल है कि हम 15 to 20 बिलियन हम जो है ना 2025 जो है ना इस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर इंसेटाइज कर रही है ऑल दीज 3 सेक्टर्स। एग्रीकल्चर भी ऐसा है कि जो करंटली 24% है हैज द पोटेंशियल टू गो फॉर 55% ऑफ जीडीपी। इंडस्ट्रियलाइजेशन सर जो मेन चीज जो है जो जिसको कर्व कर दी है सर, जो रोकती है वो है स्मगलिंग, एंड स्मगलिंग जो है ना उसको गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव सर, जो means I'm doing on a project that is curbing the smuggling as well. So इस तरफ भी
से जो है ना प्रमोट होगी सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोकल बिजनेस प्रमोट होंगे सर, इंडस्ट्रीज आएंगी, एंड देन ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन होंगी, एंड ऑल दिस थिंग्स। Thank you, Shahzad sir. Very valued contributions. Just some housekeeping के जब भी कोई स्पीकर बात कर रहे हो तो काइंडली बाकी सारे खुद को म्यूट रखिए। आपने सुन लिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी वैल्यूड थॉट्स, and I largely agree with the perspective. Now we'll go through some major individual measures. So one by one, I'll ask the questions. First things first, I'll direct this question towards you, Mudassir sir. आपके नॉलेज में है कि काफी ज्यादा एक आउटक्राई आ रही है ओवर अ प्रपोज्ड मेजर. The measure is actually what business community has long been proposing, and that is that the audit powers have been taken away from the FPR, and there would be independent audit by professionals. Um, Inshallah, hopefully, we'll see ACC a part of that too. But after the audit, or even otherwise than the audit, if there is concrete evidence or information of tax evasion, then the culprit can be arrested. What are your views on this move? How do you view it? उमर, मैंने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया 97 में, तो 99 वाज द फर्स्ट ईयर जब मैंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एज थर्ड पार्टी ऑडिटर के तौर पे काम किया। उसके बाद 2001 में हमने एक यानी इसी उसमें से गुजरे, एंड देन 2011 या 12 के अंदर एक दफ़ा ये दोबारा इसी तरीके से थर्ड पार्टी ऑडिट्स जो हैं वो एलोकेट हुए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 12 था या 13 था। तो ये 2-4 दफ़ा एफबीआर ने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं इसका बहुत कह लीजिए कि बड़ा सपोर्टर हूँ। उसकी कई रीजंस हैं। एफबीआर की जो कैपेसिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं कहता कि हम रिप्लेस कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को, बट हम उसको बड़ा अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। 99 और उसके बाद के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला, हमने वो इश्यूज हाईलाइट किए in compliance side or in erroneous and prejudicial to the interest of revenue side के जो टैक्सेशन में हमें नजर आ रही थी, जो एफबीआर को डायरेक्टली उस सेक्टर के अंदर नहीं पता था, यानी बेशुमार सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज एसेंशियल, दैट इज वाइटल फॉर द ऑडिट सेक्टर टू वर्क एज डेटरेंट, और ये जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लेकिन आई थिंक जी जी जो आपने कहा है इसके ऊपर तो एक ओवरवेलमिंग कॉन्सेंसस है। इवन जो जी जी एफबीआर के अपने ऑफिशियल्स है वो भी एग्री करते हैं। लेकिन जो इसका पार्ट है उस पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हाँ, है कि मैं ये जो मेजर अनाउंस की गई है अरेस्ट की, आप इसके हाँ बारे में क्या राय? जी, आई एम कमिंग टूवर्ड दैट थिंग। देखिए, इस वक्त जो इशू है, जो 203A से ऑनवर्ड उन्होंने सेक्शंस डाले, मैं आज रिकॉर्डर के ऊपर देख रहा था कि गवर्नमेंट हैज टेकन इट बैक विदाउट एनी कंडीशन, और उसको मैं उसके बड़े अगेंस्ट हूँ। उसकी कई रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि जब आप पावर वाइड स्वीपिंग पावर्स दे देते हैं तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिनको कह लीजिए कि क्रिस्टलाइज होने में टाइम लगता है। बहुत सारे लिटिगेशन के फॉर्म्स के ऊपर उसने फाइनलाइज होना होता है। देयर कुड बी अ डिफरेंट व्यू इन द लीगल साइड एंड फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स, जिसके लिए लीगल फॉरम्स दिए गए हैं। तो उन लीगल फॉरम्स को कह लीजिए अवेल करने से पहले अरेस्ट की पावर्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा वाइड स्वीपिंग पावर्स और मिस यूज होती है। आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर हमारा ऐसा है कि हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे फिर टैक्सेशन की साइड के ऊपर, कि हरेसमेंट का ज़रा सा भी अगर पावर किसी को दे दी जाए तो वो अल्टीमेटली हरेसमेंट के लिए यूज़ होती है। सो इसलिए आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, एंड आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट की ये जो खबर आ रही है कि वी आर टेकिंग इट बैक, इनको बैक ले लेनी चाहिए, या इसको इस तरह अमेंड करना चाहिए कि ये सेकंड लेवल ऑफ जो आपकी अपील है, कम से कम एटलीस्ट फैक्ट्स के ऊपर वहां से एक चीज फाइनलाइज हो जाए और एक नोटिस उसको दे दिया जाए कि वो रिकवरी के अंदर आ जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर बेशक अरेस्ट किया जाए,
ये कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी लीगल फोरम से पहले किसी को अरेस्ट करना ये बहुत ज्यादा वो होगा। जी शहजाद साहब, वर्किंग इन एफबीआर, मिसयूज ऑफ पावर, लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट साउंड्स फेमिलियर। अब आप ये बताइए, ऑल दो मीडिया ने तो इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन जहां तक मेरी इतलात है अभी तक गवर्नमेंट ने इसको कोई विड्रॉ नहीं किया। अलबत्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने ये वजाहत जरूर दी है कि इसकी जो अप्रूवल होगी, हम सबको पता है फाइनल वर्जन होगा जो अप्रूव फाइनेंस एक्ट है, उसके अंदर उनका कहना है कि ये ऐड कर दिया जाएगा कि सिर्फ उनकी अप्रूवल, यानी फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल से सीरियस केसेस में ये एक्शन लिया जा सके। अब ये एक जो आपने मुदस्सिर साहब का पर्सपेक्टिव सुना, ये एक बड़ा वाइड स्प्रेड पर्सपेक्टिव है और उसकी वजह वही है लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। आपने सुने हैं उनके अल्फाज, अब्यूज ऑफ पावर या माजी में भी होती रही है, अभी भी होगी, अनचेक पावर। तो आप बताइए एफबीआर की तरफ से आपकी क्या राय है इस पे, एज समवन वर्किंग देयर? Yes, sir. Good. इट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका बेटा? अभी आपके बाबा हमें कुछ पढ़ाने लगे हैं, आप उधर ना पीछे बैठ के सुनो। जी ओवर टू यू शहजाद सर। शहजाद, आई थिंक आपका नेट का इशू है, आप उसको जरा फिक्स कर लें और आप प्रिंसेस को भी जरा चेक करें, उनको थोड़ी अटेंशन दें। मैं कासिम से डिस्कस करके आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन, लेकिन आप ये जहन में रखें। मूविंग फॉरवर्ड, कासिम साहब, आपने बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से पहले ही ये बात की और राइटली सो इसको मैंने भी हाईलाइट किया है, एसीसीए ने भी इस प्रपोजल में, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री के जो कैश विड्रॉवल और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स विड्रॉवल थी, उसको इस वजह से सपोर्ट किया कि उसकी वजह से जो एक ब्लैक इकोनॉमी चलना शुरू हो गई थी कैश विड्रॉवल पे। लेकिन जो डिट्रैक्टर्स हैं इस मूव के, उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए एक मैयर आपने इंट्रोड्यूस की और उससे एक डिफरेंशिएशन कायम हो रही थी फाइलर नॉन फाइलर में, एंड नो डाउट और भी बहुत सारी मैयर हैं, बाकी एरियाज अभी भी रिटेन है जो 100% टैक्स का डिफरेंस है, दूसरी लेवरेजेस हैं जो फाइलर को फायदा देती है, लेकिन ये शायद सबसे पॉपुलर थी। एक आम बंदे का क्योंकि कैश विड्रॉवल से तो इंटरेक्शन होता था, तो ये तो उसको समझ आता था, तो ये विड्रॉ करना कहीं वो जो एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करने की एफर्ट्स थी और डिफरेंशिएशन की पॉलिसी थी, आपको ये नहीं लगता कि उसको सेटबैक दे रही है? ओवर टू यू। अच्छा सर, आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं शायद इस लिहाज से आप एक एस्पेक्ट देख रहे हैं। मैं चूँकि बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियसली इसमें डिफरेंशिएशन तो आ गई ना। मतलब आप देखें कि इफ़ यू आर फाइलर then you have a different tax rate and non-filer. Initially there were two different tax rates. फाइलर के लिए थोड़ा जो कम था और नॉन फाइलर के लिए थोड़ा ज़्यादा था। देन सब्सिक्वेंटली जो लोग फाइलर थे उनके लिए वो अबॉलिश कर दिया गया कि नहीं, नॉन फाइलर जो हैं उनको ये पेनलाइज किया जाएगा। और एट दैट टाइम मैं खुद भी ये समझता था कि हाँ दैट्स गुड कि अगर लोगों को टैक्स नेट में लाना है तो इसके लिए ये एक होगा। और मैं यकीन करें, आई नो नंबर ऑफ पीपल जो कि बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए या अच्छे लेवल पे जॉब करते हुए भी अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया करते थे। तो दे स्टार्टेड टू फाइल देयर रिटर्न जस्ट बिकॉज टू बिकम फाइलर और टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस क्लॉज कि जी अगर हम फाइलर होंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है उसके अंदर ये वाले बेनिफिट्स होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन फिर वही बात है, जब व्हेनेवर किसी की पॉजिटिव आता है तो फिर उसके साथ कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं। उनमें से एक नेगेटिविटी ये थी जो कि कैश विड्रॉल्स के ऊपर थी। बिजनेसेस बहुत सारे जो हैं वो इससे हर्ट हो रहे थे। ऑब्वियसली जिसकी 50,000 से ज़्यादा की विड्रॉल है तो उसके ऊपर तो वो टैक्स आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
शायद वो भी एक फैक्टर हो इसमें। जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ पैरेलल बैंकिंग शुरू हो गई थी, लोगों ने ज़्यादा कैश खुद से कैरी करना शुरू कर दिया था, वो तो एक मेजर एस्पेक्ट है ही, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आप देखें, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उनके लिए तो डेली कैश विड्रॉल 50,000 से ऊपर तो चली जाती है। सो उनके लिए उसको ये बूस्ट मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बेहतर है कि आप ये देखें कि जो उसके ऊपर उसकी ऑब्वियसली सिस्टम पर देयर और उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था, लेकिन डिपॉजिटर को लेके आना, स्पेसिफिकली उस डिपॉजिटर को जिसका कैश फ्लो ऐसा है कि जो एम्बेड में आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली इससे मोटिवेट होगा और इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू कासिम। ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये पब्लिक डिस्कोर्स है। हमारा तो प्रपोजल ही यही था जो आपने कहा कि इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके far outweigh the cost, and you shared the same opinion. Atif साहब, आप next ready रहें, since Shehzad साहब is now available, so we'll go back to Shehzad. The original question, Shehzad, जो आपने discourse सुना मुदस्सिर साहब से about those powers of arrest and all, the lack of public trust, possibilities of harassment and misuse by FPR. आप अगर इस पे एग्री करते हैं, वेल एंड गुड, विल मूव फॉरवर्ड। अगर आप कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं तो प्लीज गो अहेड। यस सर, थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल harassment or trust or corrupt practices either from the taxpayer or from the tax authorities, both are very common actually. टैक्स पेयर भी जो है ना, टैक्स बचाने के लिए कई कई वो रास्ते वो अपनाता है सर, डिफरेंट वेज अपनाता है अपने टैक्स को मिनिमाइज कर शो करने के लिए। फिर अथॉरिटीज भी हैं जो है ना सर, वो भी फिर ऐसे ही हैं हमारी। तो यस सर, और दिस इज एक्चुअली अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो है ना वो था कि लोग जो है ना उसको डरते थे सर, उस चीज को जो है ना वो करने के लिए। तो काफी सारे सर जो है ना पावर्स की प्रपोज किया गया है, पावर्स में रिडक्शन को। इस सेक्शन 120 है सर, वो एडजस्टेड असेसमेंट मैकेनिज्म जो है ना वो उसको एक्ट किया गया है, और ये 147 जो इस तरह विड्रॉल ऑफ कमिश्नर पावर्स रिजेक्ट द एडवांस टैक्स एस्टिमेट भी है। इस तरह ये जो मुदस्सिर भाई ने इसके ऊपर रोशनी डाली सर, वो भी है। सो ऑल दीस मेजर्स आर ऑन पाइपलाइन सर। थैंक यू शहजाद साहब। तो परहैप्स वी कैन से यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो पब्लिक डिस्कोर्स में शायद इतना डिस्कस नहीं हो रही। तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को किसी भी बोनाफाइड एक्ट के लिए लीगल कवर अवेलेबल है, लेकिन इवन एट प्रेजेंट अगर कोई भी शख्स, इन दिस केस अ टैक्स पेयर, कैन प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट एनी एक्ट वाज नॉट बोनाफाइड, तो वो कवर कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म हो जाए। ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने काफी ये डिस्कोर्स फॉलो किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवन बड़ी सीरियस प्रोफेशनल डिस्कशंस में भी ये बात हाईलाइट नहीं होती। तो एक तो ये हमारे ACCA के प्लेटफॉर्म से लोगों को चली जाए कि ये एक लीगल रिकोर्स अवेलेबल है। हाउएवर मैं यही समझता हूँ, मुदस्सिर साहब ने भी दुरुस्त कहा और शहजाद साहब का भी पर्सपेक्टिव ठीक है कि अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल मेजर्स चाहिए, टैक्स रेट भी कम करना है, ट्रस्ट भी इंश्योर करना है ताकि दोनों एंड से प्रॉब्लम खत्म हो। लेकिन मीनवाइल जो इन्वायरमेंट है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। तो ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे होगा, इसके साथ अगर ये वजाहत भी कर दें जो ऑलरेडी मौजूद है कि जी कानून ये कहता है कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई भी एक्ट बोनाफाइड नहीं था तो लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, तो इससे पब्लिक ट्रस्ट का एक इशू शायद बड़ी हद तक एड्रेस हो सकता है। मूविंग ऑन टू यू आतिफ साहब। आतिफ साहब, एक इशू बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। आई थिंक कि जैसे आप सब ने ओपनिंग में अपने रिमार्क्स में कहा कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में स्पेशली कोविड-19 के बाद जिस तरह एक रिसेशनरी प्रेशर आया है, इस बजट को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन इंटरनेशनल इदारे लाइक फॉर्ब्स एक्सेट्रा, सबका एक पॉजिटिव फीडबैक आया है। लेकिन 2-3 मेजर्स है जिनको हमें एज प्रोफेशनल देखना होगा। उसमें से एक मेजर पे आपकी राय चाहिए। आई थिंक मुदस्सिर साहब थे और भी एक दो दोस्त थे जिन्होंने अपनी ओपनिंग में ये एड्रेस किया है कि गवर्नमेंट ने सैलरीड क्लास की जो
एक एग्जेम्प्टेड इंसेंटिव है हेल्थ के हवाले से, उसकी जो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि इससे काफी एक डिफरेंस क्रिएट होगा और ये एक स्टेप है जिसको रिकॉन्सिडर करना चाहिए। इस पे एक दूसरी आर्ग्यूमेंट भी है कि एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट दे रही है सेहत इंसाफ कार्ड का, जो इस साल के एंड तक ऑलरेडी केपी में तो वो कवर हो चुका है, इस साल के एंड तक पंजाब और बलूचिस्तान का है कि लार्जली कवर हो जाएगा। एक तो उसको इससे मिला लें, फिर कितने लोग रह जाएंगे जिनके पास ये इंसेंटिव है। दूसरा, ये जो इंसेंटिव है इस पे टैक्सेशन कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि साल से इसको एज अ टैक्स प्लानिंग टूल यूज किया जाता है कि आपने किसी को एक बहुत बड़ा पैकेज देना है तो उसका एक बड़ा हिस्सा मेडिकल के नाम पे कर दिया जाता है कि वो टैक्स के दायरा कार से बाहर हो जाएगा। जाहिर है वो इवेजन तो नहीं है क्योंकि लीगली अलाउड था, वो टैक्स प्लानिंग में आ जाता है। तो एक आर्ग्यूमेंट जो आती है जो इस मूव के प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं देखें जी, एक तो रैशनलाइजेशन हो रही है टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, दूसरा जब आप एक सेहत इंसाफ कार्ड ला ही रहे हैं जिससे आप मैसेज को वाइड स्केल पे एक सेहत इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट बड़ा मिनिमल और एक मखसूस तबके तक रह जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? बड़ा टफ क्वेश्चन मैंने आपको पुट किया है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा बिकॉज इसमें खलीज बहुत बड़ी है। उमर साहब, जहां तक टैक्सेशन की बात की जाती है तो सबसे मजलूम तबका होता है जो आसानी से पकड़ में आता है, वो है सैलरीड क्लास। जिसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, तो वो जब भी उसको तनख्वाह मिल रही है टैक्स ऑलरेडी कट जाता है। अच्छा, जब इसको एग्जाम्पशंस को लाया गया था या इसको जब रखा गया था, उसके अपने मोटिव्स थे। वो मोटिव्स आज खत्म किए गए उस एग्जाम्पशन को खत्म करके। देखें, एक तो हमारे पास अगर किसी के ऊपर हेल्थ इशू आता है, लेट्स से, या हेल्थ के नाम पे कोई अलाउंस दिया जा रहा है, या ऑटोमेटिकली वहां पे दो ऑप्शन थे कि आपको फिक्स अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, या ऑल्टरनेटिवली एक्चुअल रिइंबर्समेंट जो आपके एक्सपेंस होते हैं। वो एक्सपेंसेस वो पे कर रहा है एक सैलरीड क्लास इंडिविजुअल, इसका मतलब है उसकी जेब से अपने पास से एक अमाउंट जा रही है। आज अगर उसको खत्म किया जाता है तो वो अमाउंट जो वो रिकवर कर रहा था अपने एम्प्लॉयर से वो भी देगा, प्लस उसके साथ साथ जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी पे करेगा। अल्टीमेटली जो एक एनकरेजमेंट थी मेडिकल अलाउंस देने की, या आप कह सकते हैं कि उसका जो बेनिफिट था वो इन दी हैंड्स ऑफ अ सैलरीड इंडिविजुअल, वो खत्म कर दिया गया। अब इसके ऊपर जहां बात करते हैं आप सेहत कार्ड के लाने के लिए, तो यहाँ पता नहीं कितने कार्ड आए और कितने कार्ड गए, कितने लोग उस कार्ड से फायदा उठाते हैं और कितनी अमाउंट जो है वो मिडल साइड पे, आई डोंट नो हाउ, वो प्रॉपरली डिसबर्स नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो फायदा नहीं होता। आज अगर हम बात करते हैं तो वो मेडिकल बेनिफिट खत्म करके कितनी अमाउंट रिकवर कर पाएंगे जो सेहत कार्ड की वजह से सारी पब्लिक को दे पाएंगे। हाँ, एक अगर इंडिविजुअल सैलरीड क्लास की बात करेंगे तो उसकी डिपेंडिंग ऑन सैलरी थ्रेशोल्ड उस पर जरूर इम्पैक्ट आ रहा होगा, बट ऑन दी अदर हैंड वो यहाँ से कह रहे हैं कि हम पैसा इकट्ठा करके क्या सबके लिए सेहत कार्ड लाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर वो हो भी सकता है तो किस हद तक इनिशियली फौरन से लोगों को ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये उमर साहब, आज मैं कह रहा हूं कि ये वापस प्रोविजन लाई जाएगी। अगर एग्जाम्पशन आज खत्म की गई है तो ये वक्त आएगा दोबारा वापस आएगी, क्योंकि इसका जो उसकी नेट क्या वजह बेनिफिट हो तो जिस नहीं जो वो मुदस्सिर और कासिम ने कही थी कि पॉलिटिकल प्रेशर्स के अगेंस्ट फिर इकोनॉमिक डिसीजंस अमेंड हो जाते हैं? बात तो यही है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सी प्रोविजंस को एक बार चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ रहे होते हैं, तो कुड भी पॉसिबल यहाँ पे ये होगा। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं सैलरीड क्लास को, उन्होंने हमें ये कहा कि हम कोई टैक्स लगा नहीं रहे। हाँ, वो सही कह रहे थे कि उन्होंने टैक्स रेट बढ़ाया नहीं। जब एग्जाम्पशन खत्म कर दी गई तो ऑटोमेटिकली टैक्स तो कलेक्शन हो गई ना। अगर एक बंदे की बेसिक सैलरी का भी 10% उसको मिल रहा है तो आप उसका इम्पैक्ट निकालें, स्पेसिफाइड अमाउंट आपके पास चली गई। अच्छा, उसके साथ अभी तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके ऊपर आप देखिएगा कि लोग लिटिगेशंस में जाएंगे। जो प्रोविजन लाया है कि फिक्स अमाउंट ऑफ अलाउंसेस जो है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, उसको पार्ट ऑफ सैलरी बना दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे आएंगी कि जो एम्प्लॉइज को
जो वाकई वो बिजनेस एक्सपेंस कर रहे होते थे और उनको उसके नाम पे अलाउंसेस दिए जा रहे होते थे, स्पेसिफिकली जो मार्केटिंग टाइप के लोग हैं या जिनको कुछ और गाड़ियों के साथ फ्यूल अलाउंस दिए जाते हैं या इस टाइप की चीजें। तो अल्टीमेटली ये भी एक नई बहस छिड़ेगी जो अभी तक सही प्रॉपरली छिड़ी नहीं है। तो इम्पैक्ट तो आया, सैलरीड क्लास से इन्होंने टैक्स तो लिया है और बढ़ाया भी है। ऑटोमेटिकली ये जब कैलकुलेशंस बनेंगी तो सबको सामने आएगा। यहाँ पे ये राय देना कि टैक्स नहीं लगाया गया ये भी गलत रहेगा। तो लेट्स सी, चलें, ऑफर द बेस्ट किस तरह से ये मैनेज करते हैं। चलें, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे है मुदस्सिर साहब। गवर्नमेंट ने जो अपनी रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं उसमें अबाउट 500 बिलियन की शॉर्टफॉल थी। उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है तकरीबन 60 बिलियन पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी से कैलकुलेट किए गए हैं। नाउ वी नो कि पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है उसके मुताबिक अगर 1 रुपया पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी में बढ़ाएं तो तकरीबन 2 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। तो 60 बिलियन का मतलब ये बनता है कि एनीवेयर अराउंड 30 रुपीस तक, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइसेस रहती है, कंजम्पशन हमारी कितनी बढ़ती है या कम होती है, ये रेट्स बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी जो एक इकोनॉमिक ट्रबल्ड फेज रहा है उसमें रिकवरी की सबसे बड़ी कॉस्ट हमने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की शक्ल में दी है। फिर एक अनप्रेसिडेंटेड कोविड ने हमें हिट किया जो 100 साल बाद दुनिया की एक इकोनॉमी ने फेस किया है। अब इन रिसेशनरी प्रेशर्स में ये जो पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी है जो 8,500 अरब प्लस के बजट में 60 अरब रुपए के लिए करने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इसकी जो पॉसिबल कॉस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन वो जस्टिफाई करती है इस मूव को लेना, या कोई ऑल्टरनेट देखना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है उमर के, ऑल्टरनेट देखना चाहिए था, क्योंकि ये वो एरिया है जिसके अंदर मासेस हिट होते हैं। मासेस की जो और साथ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इसके अंदर आता है। डायरेक्टली भी मासेस हिट होते हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने डेली उसकी कंजम्पशन करनी है, और इनडायरेक्टली क्योंकि गुड्स आपकी महंगी हो जाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और बाकी चीज़ों पे आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको कोई अदर थॉट जरूर देनी चाहिए थी। लेकिन हैविंग सेड सो ये एक इजी साइड भी है गवर्नमेंट के लिए टू कलेक्ट दिस थ्रू पेट्रोलियम लेवी के। वो जाहिर है कि इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं और लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए ये इजी होता है। सो जो देखने में आई ये चीज के गवर्नमेंट के पास ये वाला जो टूल है जो पेट्रोलियम के थ्रू वो पास ऑन करते हैं, इसका जो ये जो टूल है इसको बहुत ही वाइडली यूज किया जाता रहा है। गो के पिछले साल 1.5 साल के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा रैशनलाइजेशन जो है वो होती रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके थ्रू नहीं होना चाहिए था, कोई अदर मीन लाना चाहिए था। लेकिन अदर वाले में प्रॉब्लम यही है कि जब एफबीआर के साथ आप डिस्कस करते हैं ना इन एरियाज को, तो वहाँ पे ये इशू आता है कि उन्होंने इन सेक्टर्स को बड़ी डिटेल में स्टडी नहीं करवाया हुआ। 10-12 साल पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी कि कुछ एरियाज को स्पेशल सेक्टोरल स्टडीज कराने की कोशिश की गई थी, फिर गिव अप कर दिया गया और दोबारा वो स्टडीज नहीं हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे पेट्रोलियम है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे और आपको और सबको हमें मालूम है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, लेकिन सेक्टर वाइज जब स्टडीज होंगी तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हमने अगर 1,000 बिलियन ऐड करना है तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इतनी जान है कि हम उसको लेके जाएं और आम मास जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो यू राइटली मेंशन्ड कि जो जो मेरी सोच है वो भी यही है कि अदर वे अराउंड कोई मैकेनिज्म होना चाहिए था इसके अंदर। थैंक यू जी। अच्छा जी, कासिम साहब ये बताइए हमें कि बैंकिंग सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंटरेस्ट फ्री लोनिंग की जाएगी अप टू 5 लाख शहरों में स्मॉल मीडियम बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए, और अप टू 1.5 लाख किसानों को हर फसल के ऊपर किसी भी उनकी रेलेवेंट प्रोजेक्ट, ट्रैक्टर चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सीडिंग चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या बैंकिंग सेक्टर इस मूव को फुली सपोर्ट करेगा?
जी बिल्कुल सर, आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हैं मोर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोविड के बाद तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आया। मोर स्पेसिफिकली अगर आपको मैं बताऊं कि जो एक साल के लिए जो है एसपीबी की तरफ से इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी कि आप लोन जो है डेफर कर दिया जाएगा, तो वो उसका भी बेसिकली इम्पैक्ट यही था कि जो क्राइसिस आ रहे थे आपके कोविड की वजह से, उसको ओवरकम किया जाए। और माशाल्लाह आप देखें ओवरऑल जो एक साल के बाद अब आया तो मतलब ग्रोथ माशाल्लाह ठीक रही है। इसी तरीके से हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो है गवर्नमेंट की फाइनेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि बेसिकली कोविड के पीरियड में थी कि ताकि स्टाफ और सैलरीज और वेजेस वगैरह जो हैं उनको मीट किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप ये कह रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट की गई हैं, इससे डेफिनेटली इनकरेज होगा और बैंकिंग सेक्टर को भी इससे फ़ायदा होगा। मोर स्पेसिफिकली जो लोग जो अवेल नहीं कर सकते, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में हैं, वो भी इससे बेनिफिट उठाएंगे। थोड़ी सी बात हटके हो जाएगी, लेकिन वो भी इंटरलिंक्ड ही है। मैं आपको इसमें एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की इंटेंशन आप ये देखें कि गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम जो कि आई है हाउसिंग के हवाले से, उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और उसका आप इम्पैक्ट ये देखें कि उसको तमाम बैंक्स के जो सीईओज हैं उनके केपीआई में डाल दिया गया है। तो इससे मेरा ख्याल है कि हमें ये गवर्नमेंट की इंटेंशन को देखना चाहिए कि वो डाउन द लाइन किस तरीके से बेनिफिट्स लाना चाहती है, और ये चाहती है कि अवाम, खुसूसन बिलखसूस जो माइक्रो सेक्टर में हमारा सेगमेंट है, वो इस फाइनेंस की जितनी भी फैसिलिटी है, लोन वगैरह, उनसे बेनिफिट लें। और उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर इनिशिएटिव ले रही है, और मैं तो इसको खुशाइन करार देता हूँ। थैंक यू। आतिफ साहब, आपकी तरफ आएंगे आपके पसंदीदा शोबे के बारे में, एग्रीकल्चर। आज से 4-5 साल पहले, जब आई थिंक 5 साल पहले, जब मैं पहली दफा टैक्सेशन कमेटी के चेयर का चार्ज लिया, तो अमंग अदर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रपोजल्स हमने एग्रीकल्चर के हवाले से भी ये प्रपोजल देने शुरू किए कि आप इसको रैशनलाइज करें और प्रोविंसेस को भी इनकरेज करें कि एक बड़ा लो सिंगल डिजिट टैक्स लगाएं लार्ज फार्मर्स के ऊपर, लेकिन उसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाएं और ये सारा रेवेन्यू एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट करने के लिए यूज करें। सीड के लिए यूज करें, वाटर के लिए यूज करें, ट्यूबवेल्स के जो इशू होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज करें, इंटरेस्ट फ्री लोनिंग करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्विंसिंग, वी आर ग्लैड टू सी के उसकी पार्शियल एडॉप्शन होना शुरू हो गई है। जो इंटरेस्ट फ्री लोनिंग वगैरह के हवाले से कहा गया है, टैक्सेशन साइड पे तो अभी इतना नहीं हुआ। हमें पता है कि एक बड़ा पावरफुल सेगमेंट है जो लार्ज लैंड ओनर्स का है, और वो रिफॉर्म के हवाले से हमेशा एक पॉलिटिकल प्रेशर और इशू क्रिएट हो जाता है और कोई भी गवर्नमेंट उसको नहीं कर पाती। होपफुली इन फ्यूचर होगा, लेकिन जितना भी हो रहा है, स्पेशली ये जो इंटरेस्ट फ्री लोनिंग हो रही है और फार्मर के लिए प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस वगैरह का अनाउंस कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और स्पेशली आई वुड लाइक के एज अ मेंबर ऑफ टैक्सेशन कमेटी कैसा फील कर रहे हैं कि हमारी जो साला साल की एक एफर्ट्स हैं वो कल्मिनेट होना शुरू हुई है इस एरिया में जो बड़ा चैलेंजिंग है? उमर साहब, आतिफ। यकीन जानिए कि ये एक बड़ी खुशी की खुशाइंद बात थी कि जब हमारे इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने कंसिडर किया और जिन पॉइंट्स पे हमने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि आप सिंगल डिजिट में भी आए और उसके साथ उस अमाउंट को, कलेक्टेड अमाउंट को इन्वेस्ट करें, लाइक सीड्स में या किसी और सब्सिडीज में, किसी भी तरीके से बेनिफिट दें। और आज उसके असरात जो हैं वो हमने इस फाइनेंस बिल में देखे, जो कि बड़े पॉजिटिव साइन थे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि हम बीइंग अ पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे पास बहुत खुली जमीन है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हमारी जीडीपी में हम कहते हैं कि 25%, 24% तक का कंट्रीब्यूशन है। ऑल्दो एक ये यू कैन से कि इंटीग्रल पार्ट है और वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे ओवरऑल जीडीपी में, जो एक तो प्रोडक्शन के थ्रू और फिर हमारी लेबर की खपत के थ्रू
और फिर बहुत से लोगों को रोजगार का प्रोवाइड करना, वो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। अभी गवर्नमेंट ने जिस चीज को कंसिडर किया, ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन या रिड्यूस रेट पे लोन प्रोवाइड करना या ऐसे पैरामीटर्स को कंसिडर किया, जिससे होगा क्या कि अल्टीमेटली वहां पैसा इन्वेस्ट होगा, प्राइसेस रिड्यूस होंगी और जो जमींदार तबका है वो ज्यादा से ज्यादा खाद कह सकते हैं, अच्छे सीड्स कह सकते हैं, या वट एवर जो भी वहां पे यूटिलाइजेशन होती है इंक्लूडिंग दवाइयां, तो उसको कंज्यूम करके प्रोडक्शंस को या ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये एक खुशाइन बात है। लेकिन हम इस चीज को जरूर दोबारा से इनकरेज करेंगे कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस पाकिस्तान एक लेके आए, जिसमें जो बीइंग एन एसीसी हमने रिकमेंडेशन दी कि इसको सिंगल डिजिट पे लेके आए, ये बहुत अच्छा होगा। अगर उस सिंगल डिजिट को ही कंसीडर करें तो एक हैंडसम अमाउंट इनके पास रिकवर होगी, जिसको बेशक वो रेवेन्यू जनरेशन मोड ना रखें बल्कि री इन्वेस्टमेंट मोड रखें। टेक्नोलॉजी, मशीनरी, सीड्स, जो डीजल ऑयल हमारा यूटिलाइज होता है या नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा थैंक यू इंटरलिंक करना चाहूंगा। लेट्स प्रपोज आवर मेंबर्स के वो हमारे प्रपोजल्स में ये डिटेल देख लें, क्योंकि हमने अब क्वेश्चन एंड आंसर भी ओपन करने हैं। थैंक्स फॉर योर इनपुट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शहजाद। मीनवाइल सारे अटेंडीज जो हैं, आप किसी भी पैनलिस्ट से या ओवरऑल पैनल से कोई भी सवाल करना चाहें, आपके पास चैट बॉक्स है, काइंडली उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें क्वेश्चंस के सेक्शन में, ताकि बाय द टाइम शहजाद ये क्वेश्चन आंसर करें आपके क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हों। मुझे ऑलरेडी नमाज ब्रेक के हवाले से सवाल आ रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है और बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट और फीडबैक शो हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली वी डिसाइडेड कि हम ब्रेक नहीं ले सकेंगे। हम पूरे 7 o'clock इसे कंक्लूड कर देंगे, which will still leave some time, ताकि जिन दोस्तों ने नमाज नहीं पढ़ी वो उसको पढ़ सकेंगे। सो शहजाद, ओवर टू यू जस्ट वेरी क्विकली। ये बताइए कि साल साल से एसीसी प्रपोज कर रहा है बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग मूव्स टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए। मैं आपसे बड़े फख्र से शेयर कर सकता हूँ कि हम पाकिस्तान की पहली अकाउंटिंग बॉडी थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ आप ये टेक्नोलॉजी यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, और उसके नतीजे में नादरा का भी डेटाबेस है, विद होल्डिंग का भी साल से डेटाबेस है, अब तो सारे हमारे पास है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की भी अब एक्सेस हो गई हुई है ऑन नोटिस, तो इनके ऊपर आप अप्लाई करें। लेकिन हम देखते हैं इतने साल होने के बावजूद उस शेप में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो कहते हैं इस पे कुछ लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, और मोस्टली वो फीडबैक एफबीआर की तरफ से आता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर यस सर वेरी राइट सर, ये वन ऑफ द सजेशन ऑफ एसीसी प्रपोजल में भी था, और भी जो है ना सजेशंस प्रपोजल्स आई हैं इसी हवाले से कि मोस्ट ऑफ द जो स्टाफ है वो उसकी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और चूंकि बैकग्राउंड जो है ना सर वो ज्यादा रिलेटेड आप कह लें, वो ट्रेनिंग्स तो वो करवा देते हैं इंडक्शन के बाद, लेकिन वो जो बैकग्राउंड होता है जो 4-5 साल में जो बंदा 4-5 साल में सीखता है और जो है ना 6 महीने या 8-10 महीने ट्रेनिंग्स करके आगे आता है, डिफरेंस जो है ना थोड़ा बहुत होता है सर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट सर, स्पेशली अब जो प्रपोजल्स आई हैं सर, तो एसीसी की भी यही थी कि हमें जो है ना वो जो है अपना प्रोफेशनल बॉडीज हैं सर, इनको जो है ना ऑन बोर्ड लेके जो है ना इनसे सजेशंस लेके इनके जो भी अगर हो सकती हैं इंडक्शन के प्रोसेस में आ सकती हैं सर, तो उनको लेके तो ये सर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्टाफ डेवलपमेंट जो है ना वो की जाए। तो और इसके अलावा क्या पूछ सर आपने? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू शहजाद। कैपेसिटी इनहेंसमेंट होनी चाहिए, और एसीसी ये भी प्रपोज करता रहा है कि स्पेशली ग्लोबली प्लेस होने की वजह से जो हमारी ग्लोबल लर्निंग और एक्सपोजर है उसको हम पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए एट नो कॉस्ट भी
अपनी एक्सपर्टीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया है, लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं टैक्सेशन सब कमेटी का और तमाम पैनलिस्ट का। यू आर ऑल वेलकम। इंडिविजुअली तो वक्त की लिमिटेशन की वजह से मुमकिन नहीं है मैं सबका पढ़ सकूं, इसलिए मैंने एक ही दफा ये कह दिया है। इसके बाद जी जो हमने अनाउंसमेंट की है एमएनपी और टैक्सेशन सब कमेटी की तरफ से कि हम 4 एरियाज इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंड लोकल लॉज पे ये कॉम्प्रीहेंसिव सीपीडी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, which will be on the like of the 6-digit and 7-digit program with participation certificate। इसको भी बहुत सराहा गया है। कुछ मेंबर्स ने हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मांगी हैं, हारून साहब ने ऑलरेडी कहा है कि उनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, या अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे हमारे नाम सर्च कर लें। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड यू कैन कनेक्ट देयर टू। नेक्स्ट एक सवाल जो आया है वो ये है कि दिस हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड 203A पे हमारा जो फीडबैक है, आई थिंक के मुदस्सिर ने जो फीडबैक दिया और जो क्वेश्चन में हमने ACCA की तरफ से इनपुट दी उस पे हम सारे एग्रीड हैं, नथिंग मच मोर टू ऐड हियर। मेडिकल अलाउंस के हवाले से सवाल है, ये भी हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है अनिल की तरफ से। अनिल थॉन्शिया हैज आस्क्ड कि डिस्कशन तो ठीक है, बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक्चुअल टैक्स इम्पैक्ट कितना है मेडिकल एग्जेम्पशन का? ये जो इतना शोर मचा हुआ है, तो एक्चुअल इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि कितने लोग हैं जो उस स्लैब में जा रहे हैं और फिर हमें पता है कि सैलरी के ऊपर स्लैब के मुताबिक टैक्स हो रहा है। क्यों जी, कौन इस पे जवाब देना चाहेगा? मुदस्सिर साहब, एक्चुअल टैक्सेशन इम्पैक्ट, रेवेन्यू इम्पैक्ट है कितना इस मेडिकल एग्जेम्पशन का जो इतना शोर मचा हुआ है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखें उमर, इसके अंदर जो डिस्कशन चल रही थी ना कि सेहत कार्ड आ रहा है तो उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। देखें KPK में सेहत कार्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पंजाब में इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। इसी तरीके से सिंध अभी रहता है और बलूचिस्तान रहता है और बाकी जो एरियाज हैं वो भी रहते हैं। सो पाकिस्तान में जो लॉ जब आप चेंज करेंगे तो उसने इम्प्लीमेंट तो आज से हो जाना है। सेहत कार्ड का हमें नहीं मालूम कि वो कितना अर्सा लेगा और आएगा। इसका इम्पैक्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, प्रैक्टिकली ये वाली जो चीज़ के कितना इम्पैक्ट आएगा, अगर आप माजरत के साथ कहूँगा ये FBR को भी नहीं मालूम होगा कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि जो मैं उनके साथ इंगेज रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो आई हैव सीन के लास्ट ईयर उनको IMF ने भी ये कहा था कि जब भी कभी आप कोई एग्जेम्पशंस देते हैं या विड्रॉल करते हैं, आप उसकी कॉस्ट भी वर्कआउट किया कीजिए और उसका इम्पैक्ट भी वर्कआउट किया कीजिए। लेकिन वो लास्ट ईयर की तरह मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट भी जब वो शेयर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि 3 बिलियन का इम्पैक्ट है या 4 का है या 10 का है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक एम्प्लॉय के लिए अगर पूरा इम्पैक्ट ज्यादा नहीं भी है तो एक एम्प्लॉय के लिए ये एक रीजनेबल इम्पैक्ट है। क्यों? इसलिए कि जो एम्प्लॉय साइड का कंसर्न है वो ये है कि जब आप बिजनेस को नेट इनकम के ऊपर टैक्स करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो बहुत सारी कॉस्ट अपनी क्लेम कर लें, तो जो एम्प्लॉय है वो भी एक सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उसकी सर्विसेज को सर्विसेज कंसीडर नहीं करते हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर मुदस्सिर करते हैं। साहब, मैं एक बेनिफिट लेते हुए आपकी प्रेजेंस का एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे बड़ा क्विकली इसी का पूछ लेता हूँ। जी जी मेरी जी, कुछ सीनियर लेवल डिस्कशंस हो रही थी, ठीक उसमें है, कुछ पॉलिसी मेकर्स भी थे। ठीक है, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पुट की एंड इट डज होल्ड सम मेरिट। उन्होंने कहा ठीक है। देखिए, पूरी दुनिया में जहां भी मार्केट इकोनॉमीज है ना, नॉर्मली हम्म ये ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में ये जो बेनिफिट ऑफर हो रहा है हायर एंड पे होता है, जो एक हम्म सर्टन थ्रेशोल्ड को कैरियर में क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है। हम्म और ये क्यों ऑफर होता है? एज एन इंसेंटिव टू रिटेन दैम, ठीक है। हम्म और माजी में हमें पता है कि टैक्स प्लानिंग की वजह से इसका ज्यादा एक हम्म ट्रेंड कहना चाहिए क्रिएट हुआ। तो वो कहते हैं कि जी अब जो है एक बिजनेस जो टॉप टैलेंट रिटेन करना चाहता है, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि वो भी तो इसको एज अ कॉस्ट लेगा? मिसाल के तौर पे उमर जहीर ने या मुदस्सिर खालिद, चले वी आर पार्टनर्स इन आवर फर्म, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम एम्प्लॉयज हो कहीं पे, ठीक है, और ये टैक्स का एक बर्डन आया है, तो आई विल सिट डाउन एंड आई टेल माय एम्प्लॉयर कि जी आई एक्सपेक्ट कि ये एक एडिशनल बर्डन है,
तो you should be bearing this much cost, which should be taken as a business cost. इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज होता है, आप उसको भी बेयर करते हैं। अच्छा, ये जनरल लेवल पे तो आई अंडरस्टैंड, बिफोर आप ये बात करें कि हर एम्प्लॉय तो ये बात नहीं कर सकता ना, उस पोजीशन में होता है, लेकिन ज्यादातर एम्प्लॉयज जिनको ये बेनिफिट जा रहा है वो अपने कैरियर में उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो ये बात भी कर सकते हैं और ये चीज डिमांड भी कर सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए उमर, मैं जैसे आप भी आई थिंक प्रैक्टिस में हैं और मैं भी प्रैक्टिस में हूँ। आई नो मैनी कंपनीज जो मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर भी और दूसरी भी जो पाकिस्तान की कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये चीज़ नॉन नेगोशिएबल होती है जी। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ख़ासतौर पे सीईओ लेवल के ऊपर या डायरेक्ट बोर्ड लेवल के ऊपर जिनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट्स कहीं से वो अचीव कर सकते हैं वो करवा लेते हैं। बाकी अगर आप सारी वर्कफोर्स की बात करें तो उनका हाल ये है कि सैलरी से रिलेटेड एम्प्लॉयर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कंप्लायंस साइड को कि वो लॉ की कोई चीज भी नहीं छोड़ता। यानी यहाँ तक सो मच सो कि विद होल्डिंग से रिलेटेड और लॉ से ये जो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो ज्यादातर इन ट्रू स्पिरिट फॉलो होती हैं। तो यानी मैं तो रादर देन वजाहत कर दूं, नेगोशिएशन सवाल में जो थोड़ी मुझे बहुत लग रहा है कि सॉरी टू इंटरप्ट, सवाल ये नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है वो कंप्लायंस या कहीं और करे, सवाल ये है कि वो कॉस्ट कैसे वो बेयर करे। कि फॉर एग्जांपल मेरे पैकेज पे जो फर्क आ रहा है इस टैक्स का, उसकी प्रोपोर्शनेट वो इंक्रीज कर दे कि मेरा जो बट वो उसका नेट उमर इम्पैक्ट है साहब, वो न्यूट्रल है। नहीं, देखें वो उमर नेगोशिएशन ही है साहब ना। यहाँ पे बिकॉज इंटरप्ट करना चाहूंगा बिकॉज अगर उसका इजाजत चाहे तो। उसका एक उसका मिनट आतिफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है ना वो एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा। जब भी वो उसको प्रोपोर्शनेटली कहीं भी शिफ्ट करेगा तो जाहिर है उसको सैलरी के अंदर उसको कहीं ना कहीं उसको देना है। तो वो इम्पैक्ट लेने के लिए एम्प्लॉयर्स जो हैं वो सिर्फ बोर्ड लेवल के लोगों के लिए तो शायद रेडी हो जाएं, और वो जाहिर है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओके, सो आपके एंड। ख्याल में एक्सेप्ट फॉर सी लेवल ऑफिशियल्स, जनरली बाकी एम्प्लॉयज के लिए हमारे यहाँ एम्प्लॉयज इस पे तैयार नहीं है। ग्रेट। बिल्कुल। स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं शहजाद, कासिम और ताहिर, और सॉरी शहजाद, कासिम और आतिफ, आप तीनों के लिए वन बाय वन मैं पूछूं। शहजाद, आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है मेमन साहब ने कि शहजाद साहब एफपीआर से हैं, बहुत शुक्रिया, खुशी है कि हमारे मेंबर एफपीआर में भी हैं। ये बताएं कि ये जो प्राइवेट फर्म को ऑडिट करने की बात हुई है, क्या एफपीआर में कोई डिस्कशन है कि किस थ्रेशोल्ड की फर्मों के होंगे, या अभी इस पे कुछ पॉलिसी तय नहीं हुई? सर ये तो अभी रिसेंटली प्रपोजल आया है और इसके ऊपर अभी जो है ना फर्दर डिसीजन जो है ना वो होना है। और किस लेवल की होंगी सर, ये भी जो है ना उसमें कंसिडरेशन है कि जो मिड लेवल है, क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल है जो फर्म्स हैं बिग फोर है या वो हैं, तो डेफिनेटली वो अगर आपने अकाउंटेंसी प्रोफेशन को उठाना है सर तो फिर आपने जो है ना जो स्मॉल फर्म्स है सर उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। तो उसमें जो है ना वो भी कंसिडरेशन में है सर। तो अभी फिलहाल सर उसके ऊपर जो है ना इस तरह कंसर्न कॉन्करेंस नहीं है, बट ये है कि इट्स इन पाइपलाइन। बिल्कुल, शहजाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, जब ये बजट प्रपोजल्स आते हैं ये हतमी नहीं होते, जैसे अभी डिबेट चल रही है, इसके बाद जब फाइनलाइज होगा तो फाइनेंस एक्ट जो इनेक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट है, और उसमें बहुत सारे प्रपोजल्स में नॉर्मली चेंजेस आ जाते हैं, विड्रॉ भी होते हैं, उसकी डिटेल्स भी आती हैं। थैंक यू शहजाद। नेक्स्ट आतिफ, आपसे स्पेसिफिकली हसन साहब ने पूछा है कि आतिफ साहब ये बताएं कि ई कॉमर्स बिजनेसेस को क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे जीडीपी का बड़ा ग्रोइंग कंट्रीब्यूटर है दीज डेज। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले तो वो सैलरी क्लास के क्वेश्चन था उसको टच तो हम दूंगा। कर लेंगे, पहले जवाब दे देंगे, आप सैलरी को छोड़ दें। आपको हम वोट दिलवा देंगे, हमारा वादा है। सही है। अच्छा, ई कॉमर्स के हवाले से स्पेसिफिकली
अभी अगर मैं बात करता हूं तो जहां आउटसाइड पाकिस्तान या आईटी या टेक्नोलॉजी की ओवरऑल बात करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट के हवाले से आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज के हवाले से तो स्पेसिफिकली चीजों को लेके जरूर आए हैं कि जहां पे अगर कोई पहले प्रोविंशियल में सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन तो मौजूद थी, इनकम टैक्स फेडरल में ऑलरेडी एग्जेम्पशन मौजूद है, फेडरल में वो इस बार लेके आ गए बाकायदा कि अगर आईसीटी से कोई आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगी। जहां अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली विद इन एरिया ऑफ पाकिस्तान के अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया गया है तो उसके लिए एज सच स्पेसिफिकली कोई खास डेवलपमेंट अभी तक नहीं की गई, जो कि करने की जरूरत जरूर है, जिसका एक हम कह सके कि वाइडर रेंज में इम्पैक्ट हो, या जिसकी वजह से हम कहें कि उसको एनकरेज जरूर किया गया। ठीक है, ब्रॉडनिंग के बारे में सवाल है, आई थिंक हम काफी डिटेल से उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 2 दफा। नेक्स्ट मारूफ ने ये पूछा है, आई थिंक कासिम ये आपसे लिंक है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन फर्दर रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑन कैश विड्रॉवल and the difference in treatment between filer and non-filer, and also its pros and cons on money circulation। जी, वही बात जो हमने डिस्कस की थी कि एग्जैक्टली मैंने कैश ऑन पहले डिस्कस विड्रॉवल और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे जो विड्रॉ किया गया है। ओवर टू यू। जी 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 एग्जैक्टली वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरे ख्याल इनके दो हिस्से हैं क्वेश्चन के। एक तो ये है कि वो ये जानना चाह रही है कि ये फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से, तो बेसिकली इसका कैश विड्रॉल का जो प्रोविजन थी वो आई ही फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से थी, कि जिसमें फाइलर के ऊपर जो थी पहले शुरू में 0.3% टैक्स होता था और नॉन फाइलर के ऊपर 0.6% था। लेकिन इस पर कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ उठी कि भाई हम फाइलर हैं तो फिर भी हम टैक्स क्यों दें, तो फिर वो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था। तो फाइलर के लिए वो एग्जाम्प्ट हो गया था कैश विड्रॉल के ऊपर, और जो नॉन फाइलर से उस पर 0.6% ही था। तो यानी अगर आप देखें कि जो लोग फाइलर थे तो वो ये कैश विड्रॉल का जो एग्जाम्पशन का बेनिफिट था वो अवेल कर रहे थे। तो अब दूसरा एस्पेक्ट सामने आ गया जो कि मनी इन सर्कुलेशन का था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेकंड पार्ट है कि उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना इसको बेसिकली उठा लिया गया। जी, इसके अलावा कुछ था उसमें उमर साहब क्वेश्चन में? परफेक्ट, आई थिंक यू हैव प्रॉपर्ली आंसर्ड दैट। बहुत सारी अप्रिसिएशन के भी फीडबैक हमें आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हुए हैं, रिपीटिशन है, जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के बारे में है, और गैप बिटवीन वेरियस टैक्सेशन अथॉरिटीज पॉलिसीज और कॉमन बिजनेसमैन के इम्पैक्ट के ऊपर है। इनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि हमारे बजट प्रपोजल्स वाइडली सर्कुलेट भी हुए थे, अगर आप नहीं पढ़ सके अपनी ईमेल में देख लें, नहीं तो इंशाल्लाह शॉर्टली हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे। आप उन्हें देखिएगा, दे आर वेरी प्रोफेशनली ड्रॉन अप डॉक्यूमेंट्स, और उनको पढ़ के आपको इस पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा। इसके बाद अब्दुल वहीद साहब ने कहा, वंडरफुल वेबिनार, आर टैक्स target achieved was 3.8 trillion. 64% is collected through indirect and only 11.2 through direct. We should emphasize on direct taxes collection. CGT taxes reduced in stock market, but it is not necessary. Government should reduce corporate tax to encourage limited companies. In UK, corporate tax is only 19%. Thank you, brother. ये सारी डिटेल से हम ऑलरेडी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल भी होगी, जैसे हारून ने आपसे शेयर किया। आप प्लीज उसे सुनिएगा। अगर उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन रहे, यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट अस इवन आफ्टर दिस। ख्वाजा काजिम साहब ने कहा, व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ विड्रॉवल ऑन कैश withdrawals due to omission of withholding tax, will file a decrease in short term। ख्वाजा साहब, आई थिंक इसको हमने बड़ी डिटेल से 2 दफा डिस्कस कर ली है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस अगेन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, क्या मुझे रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा? मोहम्मद शफीक जी, बिल्कुल मिल जाएगा। अनिल उमर, रियली ग्लैड टू सी यू कंडक्ट द सेशन सो वेल, फेलिसिटेशन टू ऑल सब कमिटी मेंबर्स, थैंक यू। हसन, इज देयर एनी स्टेप taken by FPR to transfer tax burden from filer to non-filer? जी हसन, हमने इसको डिस्कस भी किया है कि अदर देन दीज मेजर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री की जहां पे कैश लिक्विडिटी का इशू था, बाकी मेजर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, 100% का डिफरेंस है, कार्स व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पे 100% का डिफरेंस है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। Furthermore, Saad Nawaz ने क्या है, sir, what kind of bank transactions are now exempt? Saad, we still have to wait for the final version, which will be the Finance Act, और उसके बाद ACCA उस पे एक सेशन कर रहा होगा,
तब हमें एक फाइनल पोजीशन क्लियर होगी। अनिल ने कहा टैक्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, परहैप्स वो पूछे हैं कि उसके ऊपर है या नहीं है। अनिल प्लीज वेट फॉर द फाइनेंस एक्ट। थैंक यू ऑल, अदिल ने कहा है। इसी तरह और काफी शुक्रिया और एप्रिसिएशन के मैसेजेस हैं। बट बीच में एक मैसेज था मुमताज साहब का, जिन्होंने कहा है कि आप लोग, स्पेशली मुझे मेंशन किया था कि उमर साहब आप बड़ा पॉजिटिव साउंड कह रहे हैं एफबीआर के ये जो टैक्स होना है, लेकिन क्या उसमें एक्चुअली जो फाइनेंशियल ऑडिट और फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम टॉप बॉडीज लाइक एसीसीए, वो भी उसका हिस्सा बन रहे होंगे। देखिए इसकी डिटेल्स तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है, बट पिछले दिनों एक प्रोग्राम में सीनियर फाइनेंस ऑफिशियल्स ने एसीसीए का नाम लेकर एसीसीए को मेंशन किया है, और बहुत सारी बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। एस चेयर ऑफ एमएनपी इस तरह एक पब्लिक फोरम पे मुनासिब भी नहीं कि उसको डिक्लेयर किया जाए। Let me just say that a lot of efforts are happening behind the scene, and the decision makers do appreciate the value and the quality which ACCA brings to the table. So let's wait and see once the Finance Act has been announced. So we have reached the last 1 minute. Once again, I would like to extend my felicitation to you all on these efforts by your MNP and Taxation Subcommittee. I would like to thank all my Taxation Subcommittee members who took time out on a weekend from their busy schedules in a volunteer capacity for our members. And I would like to thank the entire ACCA team, especially Haroon, who took time out and made the necessary arrangements to support us in conducting this session. जैसे आपसे शेयर हुआ है, please watch out your emails and do join us for the National Tax Conference by ACCA on coming Tuesday and Wednesday, which will be 22nd and 23rd of June, and similarly on the Finance Act events that we'll be holding. Also, do watch out your email for the invitations that we'll be inviting for you to participate in the programs that we have announced today. एक मेंबर और फ्यूचर मेंबर के तौर पे ये आपका फर्ज है कि आप इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा नॉइस क्रिएट करें, लोगों को बताएं, मेंबर्स और फ्यूचर मेंबर्स को बताएं, ताकि उनकी जो एक वाइड स्प्रेड फीलिंग थी कि ये एक इशू है जो एड्रेस होना चाहिए, उनके नॉलेज में हो, ये एड्रेस हो रहा है और वो इसमें पार्टिसिपेट करके अगर कोई स्किल गैप फील करते हैं तो उसको ओवरकम कर सकें। अगेन, all these initiatives are absolutely free of cost for our fraternity at no additional charge to you. That's it from us. Thank you very much for joining us today. I hope we delivered value for you. Please feel free to join us and send us any questions that you may have. And you'll keep on seeing these sessions and value additions from the entire MNP and especially the Taxation Subcommittee. Thank you all. Over to you, Harun. Thank you very much. I think very interesting session, quite interactive as well. I wish we had more time. मैंने अभी उनको message किया था. We want to gather some feedback from all participants also about the changes that are being recommended, the changes that, in fact, we are going to write a white paper which is going to go back to the Ministry of Finance about the changes that have been discussed in the session of the, so 203 पे जो changes हैं, या medical allowances पे जो changes आ रही हैं, etc. So we would have wanted that, but in any case, अब हमारे पास चूंकि वक्त नहीं है, we would appreciate अगर आप लोग वो feedback हमारे साथ वैसे शेयर कर लें थ्रू व्हाट्सएप। अरुण भाई, आपका मैंने मैसेज अभी पढ़ा है, उसमें एक चीज क्रिटिकल है, क्लोज करने से पहले उसको क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो प्रपोजल आया था 20K के बिल से ज्यादा के ऊपर इनकम टैक्स एडवांस की लेवी का, उसमें चेंज प्रपोज किया गया है। 25K से ज्यादा ये जो बिल हैं, अब इस पे सिर्फ उस सूरत में डोमेस्टिक कंज्यूमर पे लेवी होगा अगर वो नॉन फाइलर होगा, यानी जो फाइलर्स होंगे उनके 25K के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अभी भी पुराने वाला लॉ ही अप्लाई होगा, उनके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स लेवी नहीं होगा। तो ये उसी चीज से टाई अप होता है जो हम बात कर रहे थे कि बाकी मेजर्स जो हैं डिफरेंशियल पॉलिसी की, वो कंटिन्यू और एक्सपैंड की गई है। बैक टू यू हारून भाई। Thank you very much. I don't want to steal the thunder. मेरे ख्याल है बहुत interesting discussion हो गई है. Just the screen that is in front of you, I think is a wonderful initiative. इसके strings काफी जगहों पे connected हैं. अगर आप, if you can read between the lines, so you'll understand what we are trying to deliver here. What is the MNP proposing here?
right? And one important announcement, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया हुआ, लेकिन आप हमारे पास सजीद असलम भी इस वक्त मौजूद हैं. He's the head of ACCA Pakistan. He has been listening to the entire conversation as a participant. So while the conversation was happening, Sajid was listening and he was continuously on the phone with me or asking questions of what's happening, and asking and commenting about the way the debate was going. So fantastic. Thank you very much, Sajid. मैंने सजीद से कहा भी था कि वो आके कुछ बोलना चाहे तो join kar lein, but he says he's going to Actually, be a participant today. we will insist if Sajid is still here, he should turn on his cam. Let us see his face and also share his closing thoughts. I think that would be the icing on the cake. Sajid is there as a panelist only. I don't know if he can. I don't think he can turn on his camera. But let me see if he's listening and he can unmute himself. Sajid, you're unmuted. If you can unmute yourself and say a few words. Yeah, there you go. Thank you, Harun. And that was not meant like that. But I think wonderful conversation and important one. I think it's not about how the conversation is going. It's the substance. That's the important thing. How we take it forward. हमने एक conversation की, उसमें कुछ learning आई, कुछ feedbacks आए. इसको आगे कहाँ लेके जाना है, ये एक important element है. और अगर हम इस current budget और economic direction को देखें तो जो इस वक्त मेरे सामने slide है, that's a very very important slide. Banking sector is a growth engine everywhere, and recently just state bank initiative and the way the commercial banks and the banking sector had usko respond kiya hai, so I think we are seeing a one of a launching pad available to Pakistan economy to really drive that growth. Agar hum audit ki recent developments dekhein, it's a high time to review how we are conducting audit और एक overall audit profession में quality assurance के लिए क्या करना चाहिए और how the talent should be developed, नया thought process क्या आ रहा है. इसी तरह taxation और law पे देखें तो we know the members during the training and otherwise they learn a lot, but एक बड़ी consistent demand जो है MNP के पास भी और हमारे पास भी आ रही है कि students who are still like अभी fundamental papers के stage पे हैं और वो अपनी training में जाना चाहते हैं, how we can help. So I think it would be a good refresher for members and a good learning for student at the same time. Public sector going through worldwide, going through a major reforms right now. So we are not talking a lot, only around Pakistan. Public sector also create opportunity from a development agencies जिस तरह वो consulting side पे लोगों को use कर रहे होते हैं, but that's require a different kind of understanding. Corporate में एक different way से काम होता है और public sector में एक different way से काम होता है. The people who are already अगर हम ACCA पाकिस्तान का को एनालाइज करें तो पब्लिक सेक्टर में रिसेंटली एक अच्छा खासा नंबर ऑफ मेंबर्स और स्टूडेंट हैं जो आइदर ट्रेनिंग या उसमें काम कर रहे हैं. सो आई थिंक पुटिंग टुगेदर दैट इन दिस स्ट्रक्चर जो हमारे पास फीडबैक भी आया और जो डिफरेंट सोसाइटीज ने और सब कमेटीज ने जो रिकमेंडेशन दी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू पुट इट टुगेदर एंड मेक श्योर कि वी आर एज अ ACCA मेंबर जो हमारा कोर एक value है to uphold the public trust, and we can only uphold the public trust if we are prepared or with the latest knowledge. So बजाय इसके कि हम individual CPDs करें, तो I think ये best way है कि उसको एक package कर लिया जाए, उसको structure कर लिया जाए, so the people who have got a relevant interest they can go for a complete the package of the CPDs rather than the individual CPDs. So I think that's a very good initiative to put it together the way, and I'm sure employers will also value those certificates when people complete that. Those are the additional specialization or refresher for our members. Over to you, Harun. Thank you very much, Sajid. I think good closure to the conversation. But our discussion about budget and Finance Act is not over. Like I said to you, there's still a lot to come. So please stay connected with us. Please stay in contact with us. Please watch this space as we send more news to you about the events in store for you. The nearest and the biggest one is our national conference, 22nd and 23rd June, 5:30 p.m. to 7 p.m. 5:30 p.m. to 7 p.m. 22nd and 23rd June, which will be followed by a number of sessions on provincial budgets
and finally, the Finance Act sessions. So thank you very much, and kudos to the Taxation Subcommittee, one of the most active subcommittees at the moment. Thank you very much for taking time out. Really, really enjoyed the conversation, and God bless you all. See you next time. Thank you so very much. Final announcements once again for those who were not there in the beginning. Certificates will automatically be posted through your email to you, and the recording link. If you want to watch the recording, use the same link through which you've joined today. It will take you to the recording. Otherwise, जिस ईमेल में आपको आपका सर्टिफिकेट अटैचमेंट आएगा उसी ईमेल में ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग का लिंक भी मौजूद होगा ठीक है so do use that hopefully you'll find even watching the recording very interesting. Thank you so very much and take good care of yourselves. Allah Hafiz.